My talk or interaction between you. First, I want to know your introduction, just brief introduction. How many persons from quality control side, मतलब QC side? Only two. Quality control looking in the physico-chemical parameters or quality chemistry background. अच्छा, only two people, three people, four, five. And how many for pharmacognosy side? अच्छा, pharmacognosy. अच्छा, pharmacognosy. But voice is clear, I think. Their voice is not coming there. Uh, Otherwise, you can shift here. Not three people are not here. You can come here. And how many persons from Ayurveda, Siddha, Unani, Indian system of medicine? Only physicians. I am asking doctors. Okay. Uh, Doctors in the field of Ayurveda, Siddha, Unani, or homeopathy. Ayurveda. Okay. You are from Ayurveda side. Okay. Homeopathy. Okay. Anyone from microbiology side? Microbiology. So you are the microbiologist. Which institute? कहाँ से है सर? GD Pharmaceuticals से हूँ। जीबी फार्मास्यूटिकल. GD Pharmaceuticals. अच्छा, voice is not clear. That's why. GD Pharmaceuticals. GD फार्मास्यूटिकल. अच्छा, where is situated this one? This is in Kolkata. The Kolkata. makers of Borolin. Manufacturing of Ayurveda or homeopathy? No, Ayurveda. Ayurveda. Someone is coming from Gabar or Himalaya or any company, industry. Industry side, how many persons here? Okay, sir. Okay. Okay. In your laboratory, have you NABL accredited? Okay. Okay. Phytochemical side. So, development of PRS like that. Okay. Doing this. Okay. Okay. It's my pleasure. All of you have various fields of the participants to here. And just I am going to discuss what is facility difficulty if you performing the test. Actual, my background is quality control and drug standardization. I am looking the quality of the herbal drug. So why we are focusing on the quality of the herbal drug? What is the mean of quality control? In the term, if we say without quality, we can't say the desired efficacy of the product. If we require some desired product efficacy, which are prescribed by any physician, can be achieved with the help of quality drugs. Otherwise, we can't get. We can say if having some industries preparing the drug and not following the quality procedures to batch variations, we can't decide which one is the best, which one is less effective. So for that purpose, we are maintaining the quality of the drug with the help of quality parameters. So we are going to discuss the pharmacopoeial standardization and quality control of herbal drugs used in the ASU system of medicines. So pharmacopoeial standardization means some drugs are not mentioned in the pharmacopoeia. You know about 5,000 species are available in India, which are used in traditional or cold claim medicine as a medicine. But till till date, we have only 800 drugs, 7 to 800 drugs are standardized and mentioned in the pharmacopoeial book or pharmacopoeia of Ayurveda, Siddha, Unani, and Homeopathy. We are focusing about the
plant drugs. If we say metal and minerals, so around 1200 drugs are still standardized. So for that purpose, today I am going to discuss pharmacopoeial standardization and quality control of herbal drugs. You know the introductions. I think the director sir has given the brief introduction of the Pharmacopoeia Commission, so there is no need to go back. But under which rules of Drug and Cosmetic Act we are performing the work? In Rule 163A, Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homeopathy, Ghaziabad, uh, shall function to develop the amend standards and publish pharmacopoeial monographs, formularies, and standardize the procedure in respect to Ayurveda, Siddha, Unani, and homeopathy. अभी जो है हमारा जो एक्ट में है वन जो रूल है 163A के अंतर्गत फार्मेकोपिया अपना फंक्शन करती है अंडर रूल 163BB टू एक्ट एज ए CDL सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग कम अपीलेट लेबोरेटरी अंडर द सेक्शन 6 of the act testing or analysis of the samples of ASU&H drugs may be sent to under the subsection 2 of the section 11 under the subsection of the 4 of the section 25 and 33H of the state act मीन्स जो आपके ड्रग्स अपीलिएट होते हैं जैसे इसमें कुछ ड्रग इंस्पेक्टर्स भी हैं सर 2 लोग तो वो लोग जब अपने सैंपल सील करके भेजेंगे अपीलिएट वाले तो वो हमारे पास ही आते हैं फार्माकोपिया कमीशन में ही आते हैं वहाँ पे हम एज ए गवर्नमेंट एनालिस्ट को एनालाइज करके हम रिपोर्ट उन्हीं को वापस भेजते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जितने भी अपीलेट सैंपल हैं जो इनकी फाइनल एनालिसिस होगी वो यहाँ से अप्रूव होके जाती है तो उसके कई प्रोफार्मा हैं मैं आगे बताऊंगा डिस्कस करूंगा कि किसमें आपको जैसे आप लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि कौन से फॉर्मेट हैं कौन से एनालिसिस के फॉर्मेट हैं तो उनका डिस्कस हम अभी आगे करेंगे other functions of the pharmacopoeia to maintain the reference museum and herbarium for the drugs used in the ASU drugs. Yesterday you have seen our herbarium and museum, I think. So you are aware how can we maintaining the drugs in a controlled condition. To conduct the training program for analytical and drug quality control methods of Ayurveda, Siddha, Unani system of medicine and homeopathy. Means it is our mandate to train you peoples like we who are the stakeholders for the quality control. So for that purpose, we are containing and arranging some training programs to the stakeholders. To carry out the other duties such as the instruction, it may be instructed by Ministry of Ayush. Some other work है जैसे आसू टेप में मेंबर हैं फार्माकोपियल ड्रग को देखना है तो वो मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग काम करते हैं These are the publications of the Pharmacopoeia Commission. ये मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसलिए कि हमें 35 मिनट में अपना कवर करना है लेक्चर और उसके बाद डिस्कशन करना है मैक्सिमम ठीक है In India, you know, about 80% of the population use the medicinal herbs for indigenous system of medicine as a primary health care. Standards for the herbal drugs are being developed worldwide, but yet there is a no common consensus to how these should be adopted. Means country-wise it differs. In some countries, uh, herbal drugs used as a dietary supplement. Some countries use as a folk medicine. Some countries use a cosmetic product. So there is a no common sense where we can sit together and harmonize the standards for each country, which will be applicable to each. Challenges to related to the regulatory status, a single medicinal plant drug, even few metals, also may be defined as a food or functional food, a dietary supplement, or a herbal medicine in different countries, depending upon the regulations applying to the food and medicines in each country. क्योंकि सभी कंट्री के अपने अलग अलग रूल्स हैं फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट है तो वो उनके एक्ट में क्या है अकॉर्डिंग टू दे विल वर्क बट इन इंडिया अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट we characterize the herbal medicine
not in a category of food. Who here is a different type of categories, nutraceuticals, pharmaceuticals, and herbal medicines, traditional medicines like that. This makes it difficult to characterize as a ASU drugs or traditional medicine, herbal supplement foods, or cosmetic herbal versus Ayurvedic medicine. Anyone can say the definition of herbal medicine. हर्बल मेडिसिन किसको बोलेंगे? एक आपका होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो नो, कि जो आपके सिस्टम में यूज होती है, हर्ब हो या कोई भी हो, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, गिव द डिजायर्ड इफेक्ट। बट हर्बल मेडिसिन में क्या यूनिक होना चाहिए, किसको हम हर्बल मेडिसिन कहेंगे? कोई एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, हमने कोई एक फेस क्रीम बना दिया, उसमें हमने 1% या 0.1% एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट डाल दिया और बोल दिया ये हर्बल मेडिसिन है, तो क्या वो हर्बल मेडिसिन है या नहीं है? आप लोग सोच के बताइए थोड़ा। हर्बल मेडिसिन का क्या होना चाहिए, मतलब डिफिनेशन क्या होनी चाहिए? वो ऐसा है कि एक्ट में ये लिखा है कि कोई भी ड्रग हर्बल से डेवलप्ड ड्राइव्ड हो और परसेंटेज कुछ भी हो, चाहे 80% हो चाहे 0.1% हो, गिव द सम डिजायर्ड एफिकेसी फॉर व्हिच यू आर प्रिपेयरिंग। जो ड्रग आप बना रहे हैं, अगर वो उस डिसीज को क्योर कर रही है, परसेंटेज कुछ भी हो, तो यू मे से द हर्बल ड्रग। जैसे आपने कोई विथानिया डाला, विथानोलाइट का है, विथानिया डाला, और विथानिया के लिए स्ट्रेस अगर वो कम कर रही है, 0.1% भी है, तो आप कह सकते हो ये हर्बल ड्रग है। अगर आपने 10% भी डाला, डिजायर्ड इफिकेसी नहीं आ रही है, तो दिस इज नॉट ए हर्बल ड्रग, फिर वो न्यूट्रास्यूटिकल या फूड में जाए। तो ये डिफिनेशन आपको याद करना है कि इफिकेसी से डायरेक्ट रिलेटेड टू है जो हमारा हर्बल ड्रग है। तो फॉर दैट पर्पज वी आर मेंटेनिंग द क्वालिटी। नहीं तो आपको प्रोप्राइटरी आइटम में करोगे ना सर, प्रोप्राइटरी आइटम में आपको करना पड़ेगा, अपना क्लिनिकल ट्रायल देना पड़ेगा, अदरवाइज वी कांट से द हर्बल ड्रग। नहीं है कंपल्सरी। नहीं तो टेक्स्ट बुक में उसका रेफरेंसेस है। सपोज करिए आपने कंपोजिशन बनाया कोई, आपने सिंगल ड्रग का टेक्स्ट बुक में दिया, कंपोजिशन का नहीं दिया, जो अथॉरिटेटिव बुक है। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने बताया, ये वाला याद आ गया। हाँ, जो अपना ये हर्बल जो अभी हम कहने जा रहे हैं ना, जो अपना आयुर्वेदिक ड्रग या ये क्या नाम है इसका, होम्योपैथिक ड्रग, तो इसकी डिफिनेशन क्लियर है। जो ये बता रहे हैं उसमें क्लियर है कि आपके जो अथॉरिटेटिव बुक है, ठीक है, अथॉरिटेटिव बुक जो है उसमें वो ड्रग अगर मेंशन है तो वो ड्रग है, अगर उसमें मेंशन नहीं है तो वो ड्रग नहीं है। ये भी एक डिफिनेशन का ड्रग का पार्ट है। तो उसमें आपने क्वेश्चन सही किया कि वो कैसे उसमें तो उसमें क्या है, ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है उनकी, आपकी थेराप्यूटिक एफिकेसी स्टेब्लिश्ड है, लेकिन उसमें भी परसेंटेज नहीं लिखा हुआ, परसेंटेज नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कि ये परसेंटेज है हर्बल में है, तो वो ड्रग आइदर मेंशन इन द अथॉरिटेटिव बुक्स और क्लिनिकल ट्रायल डाटा इज रिक्वायर्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन से दिस ड्रग इज हर्बल और नॉट। तो वो एकदम क्लियर है। ड्रग्स की डिफिनीशन मैंने बता दिया है, जस्ट प्रॉपर्टी एंड जस्ट वो डिस्कस हो गया है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। दोनों होम्योपैथिक ड्रग्स में भी सेम है। अभी होम्योपैथिक रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, वो मैं बता दे रहा हूँ, जो बोल्ड लाइन है, होम्योपैथिक इंक्लूड्स द ड्रग्स इंटेंडेड और एक्सटर्नल यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, विच इज रिकॉर्डेड इन होम्योपैथी प्रोविंस। पहले रिकॉर्डेड वर्ड नहीं था, अभी ये ऐड किया गया होम्योपैथी प्रोविंस में रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि वो ऐसा इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, डायलूशन बहुत ज्यादा लेवल पे होते हैं, 200 एक्स तक हम लोग जाते हैं। होम्योपैथी के डॉक्टर विनीत है, शायद आज वो आए नहीं, वो बनाते हैं यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे क्या है ना, जैसे डायलूशन आप हैं डॉक्टर साहब, विश्वास जी हैं, आप भी हैं। हाँ तो हाँ 10 mm का है। तो कहाँ तक हम स्टैंडर्डाइज करेंगे वो डिस्कस करूंगा अभी। लेकिन ये जो ड्रग्स है, ये इतना चेंज किया है, जो बोर्ड लाइंस है ये अभी एक्ट में चेंजेज हुई। ये देयर इज ए 4 कैटेगरी ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन बाय WHO। कैटेगरी 1, ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट आर प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स फॉर द इंडिविजुअल पेशेंट्स
with the fresh or dried materials with a short shelf life. इसका मीनिंग बताएंगे आप लोग? जो कैटेगरी 1 है। हाँ, ठीक। हाँ, 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 राइट। और कोई देखिए, इन्होंने बहुत क्लियर बताया डॉक्टर साहब ने कि ये उन लोगों के लिए है, उस समय की बात है जब हमें एशियन काल में अगर जाएं एरा में, तो दैट टाइम वैद्याज आर प्रिपेयरिंग सम ड्रग्स इज ए शॉर्ट टर्म। वो पेशेंट को वो कफ पित्त वीर्य विपाक के अनुसार ड्रग बनाते थे, उसकी सिचुएशन देख के, और उसको देते थे, वो ठीक ठीक हो जाता था। तो आज भी है वो एक्ट में कि अगर कोई वैद्य अपने फार्मेसी में या अपने क्लिनिक पे कोई शॉर्ट टर्म के लिए ड्रग बनाता है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक उसको एग्जेम्पशन है, उसके के लिए कोई ड्रग लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग क्या है, क्योंकि वो पेशेंट के लिए पर्टिकुलर डिसीज के अनुसार, सिम्टम्स के अनुसार वो ड्रग बना रहा है फॉर दैट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ऐसी ड्रग को WHO ने कैटेगरी 1 में रखा है। Category 2 means traditional medicines currently used in the community that are the prepared in advance and composed of fruit raw materials। यहाँ पे क्या इंडस्ट्री आ गई इन्वॉल्व हो, अब वही ड्रग जो इंडस्ट्री बना रही है वो एडवांस में टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, उसी फार्म का लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। वो शॉर्ट ड्यूरेशन था, ये लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसको हम कैटेगरी 2 बोलेंगे, कैटेगरी 2 में आ गए। और नंबर थर्ड कैटेगरी है स्टैंडर्डाइज्ड प्लांट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड इन द एडवांस एंड सपोर्टेड बाय द साइंटिफिक रिसर्च। कैटेगरी थर्ड में किसी ने डॉक्टर साहब आप लोगों ने देखा है कैटेगरी थर्ड की ड्रग? हाँ, एक्सट्रैक्ट आते हैं। तो एक्सट्रैक्ट में क्या है, वो हमारा आयुर्वेदिक ड्रग में आएगा। कौन से उसमें आएगा आयुर्वेदिक? हाँ, हाँ, औषध घन के में जो जितने हमारे घन तत्व हैं, तो वो सब हमारे इस कैटेगरी में आएंगे। और हमारा वॉल्यूम जो फार्मेकोपिया का वॉल्यूम 8 और 9 है, स्पेशली डेडिकेटेड टू कैटेगरी थर्ड। अगर आप यहाँ पे अभी लाइब्रेरी में हमारे यहाँ विजिट करेंगे, अदरवाइज आपके यहाँ एक्सेसिबल होगा फार्मेकोपिया का पार्ट 1 वॉल्यूम 8 और 9। 45 मोनोग्राफ्स हैं ईच फार्मेकोपिया में, तो दे आर रिलेटेड टू द कैटेगरी थर्ड। तो उसमें भी क्या है अभी आजकल, ये हम क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन ऑफ कैटेगरी थर्ड? रीजन ये है कि जैसे आपका डोज है, जब आप डोज डिसाइड करते हैं ना, तो आप अगर किसी को 2 ग्राम लिखते हैं, अभी चूरन 2 ग्राम देते हैं ना पाउडर, वैद्य लोग आप लोग जानते होंगे, 2 ग्राम प्रिस्क्राइब करते हैं, 2 ग्राम TID, 3 टाइम 2-2 ग्राम चूरन खाना है। पाउडर वाला चूरना जो है, ये एक फिजिबल नहीं होता, खाने में बहुत प्रॉब्लम करता है। अगर 2 ग्राम की टेबलेट किसी को दी जाए तो 1 ग्राम तो खा सकता है, 2 ग्राम तो बहुत वजन हो जाएगी टेबलेट खाने में। तो इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, उसका घनत्व निकाल लेते हैं। वाटर एक्सट्रैक्ट हो गया, अल्कोहल एक्सट्रैक्ट हो गया, और वो उसके प्रोपोर्शन में ही सेम अमाउंट की हम टेबलेट तैयार करते हैं। तो उससे क्या हो गया, वेट कम हो गया टेबलेट का। तो वो हमारी बन गई 500 mg, 250 mg, उसी 2 ग्राम के कोलेंट में। तो वो इफेक्ट वही सेम डिजायर एफिकेसी आएगी। इसलिए हम ये कैटेगरी थर्ड लेके आए यहाँ, पहले WHO ने कैटेगरी थर्ड अप्रूव किया। और लास्ट कैटेगरी है आइसोलेट फ्रॉम द प्योर कंपाउंड। ये कैटेगरी अपने आयुर्वेदा में तो अप्लीकेबल नहीं होता है, आयुर्वेदा सिस्टम या ASU&H में। ये फाइटो फार्मास्यूटिकल की कैटेगरी। अभी जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो फाइटो फार्मास्यूटिकल्स एक न्यू है। एट लीस्ट यू आइसोलेट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम ए प्लेनी प्लांट मटेरियल, minimum of 4 isolates, minimum 4 pure compounds, and check there the efficacy, then you can say the effectiveness of the product। मतलब आपको एक कोई प्लांट है, उसके 4 कंपाउंड निकालने हैं प्योर, और चारों की थेराप्यूटिक एफिकेसी देखनी है। जो आपके प्लांट की एफिकेसी आ रही है वो उनमें भी आनी चाहिए, देन यू कैन से द प्रोडक्ट इज एक्टिव, आपका एक्टिव है। तो वो इस कैटेगरी में अभी नहीं है, लेकिन न्यूली लॉन्च नोटिफाई हो गया है। अभी ये हमारा CDSCO है जो ना, ये IPC कमीशन, इंडियन फार्मेकोपिया कमीशन, वो लोग भी ये देख रहे हैं।
Yeah, phytopharmaceuticals. They have developed, I think, 20 monographs. Yeah, this is the part of herbal, sir. Okay, okay, hmm, okay, right. Hmm, okay, ठीक है. Okay, okay, right. Actual situation. No, yes, there is some clarification are also required from the government side. In this issue, it is your right way, but some clarification on the category of four, which category they are considered, or category third or category four. But it is clear schedule. Okay. No, this is, in the if you take the point of physician, so some rationalization is required. Where is your therapeutic efficacy goes? According to this, you can rationalize your the product. Then you make. Then it will be covered under the ASU system. Otherwise, it is goes for the modern system. Huh. Yeah, definitely. Huh. Sir, let us we discuss later. There is a very good story, or then you will thought about this one. From this session, you will definitely get any daily resolutions. But your point is from background towards the purely research background means synthetic or in the way of chemistry point of view. If you involve the Ayurveda system or holistic approach, then it will fail. I will really will discuss. Here you know the type of the ASU drugs, single drugs and compound formulation. There is a two category. And in single drugs, you all have know plant origin, animal origin, and metal mineral origin. In compound formulation, polyhelper and herbomineral compounds are prepared with the help of some more than two or three herbal plant materials, including metal and minerals. Here, the quality we discussed, there is a three pillars I have shown here: quality, safety, and efficacy. Each related to each other. The product should be well standardized, should be free, safe for human consumption, and having some desired efficacy. जो हम efficacy चाहिए हमें वो प्रोडक्ट की efficacy होनी चाहिए. Here the parameters, I think we go one by one because someone is not in background of the chemistry. Here, first we look the organoleptic characters. Under these characters,
color, order, taste, and textures we are doing in the pharmacopoeia, and botanical descriptions study you have seen in the laboratory as well as discussed by Dr. Jayanti and Dr. Nitin Rai, and describe a description, microscopy, powder microscopy, and if we see here the physiochemicals we are going to discuss: foreign matter, loss and drying, total as, acid insoluble as, extractive value, alcohol and water soluble both, and volatile matter is the very important of the plant material which are containing the volatile ion. And for chromatography is the identification technique as well as for quantification technique, and other parameters like the drug formulations wise where is applicable. Other parameters may we are going to discuss here: pesticide residue, organochlorine, uh, organochlorine pesticides, organophosphorus pesticides, and peroxide. In heavy metals by ICP-MS, mercury, lead, cadmium, arsenic, and aflatoxins by HPTLC and HPLC, and microbial loads where the we say the safety and toxicity and efficacy of the product. Here we have mentioned the quality standards means identity, purity, and strength. These are the main 3 points we are covering. Identity we can check by the microscopy and TLC, chromatographic fingerprinting of any drug. Purity we can check with the help of physicochemical parameters. And strength we can also check the with the help of alcohol soluble or water soluble extractive. Here for the chemical origin drugs, uh, common we in the pharmacopoeial monographs we have discussed described their common name, description, identification, arsenic, and acid. If you see the homeopathic pharmacopoeial monographs where these are the points we have discussed in the monograph, and qualitative chemical test में melting points and boiling points, moisture content, identification, pH, sulfated as, optical rotation, test for heavy metals, limit test is a, and here one spectra of NIR. Here given this one, calcium carbonate. This type of the fingerprints we have received. If we are having the chemical origin drugs, so if we have the facility in our laboratory, then we can develop these type of the fingerprints. Instead of HPTLC, HPTLC is used for the herbal plant material. Here, animal origin plants used in the homeopathy, yellow snake, animal, and cockroach also they have used in the preparation of the medicines, where we checking the microscopy and microscopy identification test essay where is the possible amino acids, maybe we check which type of amino acids are present, and we check here, and sarcodes and narcodes used in the biological science of the preparation of the homeopathic medicine. Here you know the it is obvious that the content is the most difficult one to assess the thing, since in the plant based drug the active constituents are unknown. अभी जो हम प्लांट ड्रग करते हैं मैक्सिमम कितना 10% उनको नोन होता है, 10% हम केमिस्ट्री कर पाते हैं, 90% उनके प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है वो नोन ही होता है हमारे लिए एज ए केमिस्ट वी आर सेइंग. But sometimes markers can be used which are by a definition chemically defined constituents that are of the interest of quality control purpose only, independent of where they have any therapeutic efficacy or not. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. जो भी हम कह रहे हैं जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी कंट्रोल पर्पज. ये हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं जस्ट कि द कंपाउंड विच आर मेंशन्ड in the drug like curcuma longa, curcumin is the active constituents which are responsible for the its quality and efficacy both, but some evidences is required pure curcumin along with comparison of the herbal plant drug. Otherwise we can't say the
active constituent is responsible for their activity. It means the compounds which are using in the phytopharmaceuticals. Sir, ये points आपके लिए है. Sir, just your name, good name, sir. Shankar Saab. This is I am discussing here. Here we are mentioning the relate to the phytopharmaceuticals for marker compound. We have mentioning the pharmacopoeia in all pharmacopoeia. They have mentioning in case of Withania somnifera, there is a 6 or 7 markers used for the quality of their compound and having total methanolites not less than 0.05 or 0.01%. Okay, we have mentioned in the pharmacopoeia. Yes, total 90. No, no. People is asking on the vague way. That's I am saying. There is no consensus. If you have any can study of this one, some uh, drug having 0.5% methanolate, okay, some having 0.4 methanolate, which is below the recommended. So 0.4 is not active according to you. It will be active. It will give the different. No. Where no clinical evidence is still available because the drug, any drug which are prescribed in the beta text or apna ASU system of medicine, there is a no study till date available less than this active constituent, it will not work. हाँ, विथाफरिन ए आपका प्रेजेंट है फॉर ओनली द पर्पज ऑफ चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द ड्रग. Quality means this, which is the limits of the drug. Then I am second way I am asking how many limits. अगर हमने अलग से ऐड कर दिया उसमें बोल दिया तो और अच्छी ड्रग है तो क्या अच्छा हो जाएगा? ये लिमिट नहीं, मार्कर का कोई लिमिट सर एक्टिविटी से कोई रिलेटेड नहीं है. Here the any constituents which we have isolated 1 or 2% of the only the plant extract, because one plant have tremendous type of molecules. All molecules having the same horistical approach, I am giving the desired efficacy. But here we are looking only for the 1 or 2 markers, only the marketing purpose, nothing else. इसका कोई एफिकेसी के साथ कोई रिलेशन नहीं. अगर है कोई प्रूव करे यहाँ पे कि भाई 0.4 एक्टिव नहीं होगा, 0.5 वाला एक्टिव होगा. हाँ, राइट. हाँ, यस यस. हाँ, लेटर. ओके. Okay, first we cover, then you discuss. We have enough time for discussion. Here you see the control of the radar. This is the very important. Here we have showing here how many drugs we are controlling in our country, but in compared to other countries. Here we see the cursor. You see na? Here this is the drugs is packed in jute bag. Okay, in Tharibavli in Delhi market. We have taken some pictures from them market, and some drugs we have taken from the China market, where they have controlled in the market in their proper controlled conditions, humidity, temperature they have maintaining. So these drugs at the desired shelf lifetime will provide their efficacy. But in India, if we purchase from that market, and here no control of temperature, no control of humidity,
maybe discharge compound may be evaporate, may be deteriorate. So we have no control on the storage. So storage is the very important in case of when we are formulating any formulation. Here the cultivation is very important. Some we have shown the pictures. Aloe vera grown in the uncontrolled condition, and aloe vera controlled grown in the controlled condition. We if we check the quality, then definitely we get the various uh, points of the active ingredients differences in controlled condition and uncontrolled condition. Here we have kept in the Pharmacopoeia Commission for our pharmacopoeial monographs in proper controlled conditions with QR codes. This is the right way. So you can develop in the procedure in your own laboratory how we control the drugs which are going to develop any monograph or they formulate any drug. हमारे लोग क्यों लेट आए हैं? अच्छा टिकट रिलीज है. Now, another points parameters for the assessment of quality control. If you see, the chemist can easily identify larger strand, but some Ayurveda doctors or some हमारे other colleagues, we are the different participants. If seen the pharmacopoeia, so here identity is mentioned. Purity identity means identification of a drug with the help of TLC. Purity means the drug should be pure from the unwanted materials. Means if we see the name of drug is fruit of इलायची, इलायची का हमने सीड लिया, ये हमारे ड्रग में जो यूज होता है आयुर्वेदा टेक्स्ट में सीड उसमें वर्ड यूज हुआ. ऑफिशियल नेम ऑफ द ड्रग इज इलायची सीड, बट इन मार्केट और हम लोग जो लाते हैं फार्मेसी में सीड तो कोई सेपरेट नहीं करेगा, वो होल ड्रग ऐड कर देगा. तो इससे क्या होगा, आपका वेट जो है ड्रग का बढ़ जाएगा. वेट बढ़ने से क्या होगा, जो डिजायर्ड एफिकेसी आनी थी वो नहीं मिलेगी. तो फॉर दैट पर्पज वी रिमूव द अनवांटेड मटेरियल एंड गेट द प्योर कंपाउंड, प्योर मटेरियल. तो दिस इज रिलेटेड टू द प्योरिटी ऑफ द ड्रग. दूसरा क्या एक एग्जाम्पल है, इफ यू सी ना दिस वन ड्रग तुलसी और एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा, इसकी एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा वी आर यूजिंग स्ट्रिंग, तो उसमें स्टेम का पूरा पार्ट हो जाता है, वो फॉरेन मैटर है उसका दूसरे ड्रग का ही. अगर स्टेम डाल देंगे एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा में तो उसका फॉरेन मैटर है. तुलसी में हमें लीफ चाहिए लेकिन स्टेम के साथ कलेक्ट होता है तुलसी, वो उसका फॉरेन मैटर है. तो ये ड्रग करने से पहले हम उसको क्या करना है, रिमूव करना है. अभी इंडस्ट्री के लिए क्या इशू है, इंडस्ट्री में सभी सैंपल मैक्सिमम फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो प्योरिटी पे ध्यान नहीं देते हैं. ड्रग की जो मार्केट से आ रही है वो एज सच यूज करते हैं, उसको अगर प्रॉपर से प्योर करें या सेग्रीगेट करें, उसमें जितना अनवांटेड मटेरियल है बाहर निकाल दें, तो वो हमारे फार्माकोपियल मोनोग्राफ से एग्जैक्ट मैच कर जाता है. अभी एक केस आया था मेरे पास तुलसी का ही, उसमें ज़्यादा वो हमारा आयस बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसका रीजन था उसमें और भी कई पार्ट उसी के मिले हुए थे. जो ड्रग हमने देखा वो प्योर नहीं थी. तो प्योरिटी का आप जब इंडस्ट्री में है या कहीं पे काम कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि अनवांटेड मटेरियल जो है ऑफिशियल जो ड्रग होती है, ऑफिशियल ड्रग का मतलब क्या है, जो हमारा टेक्स्ट में लिखा है, हाँ उसका पार्ट वो ध्यान देना है क्या वो होना चाहिए. फॉरेन मैटर जो है ये हमने डिस्कस कर लिया, वो फॉरेन मैटर भी कहलाता है. जैसे इसमें सेंट्स हो गए, स्टोन हो गए, अडल्टेड. यू सी द एग्जाम्पल ऑफ गुगुल कमीफोरा मुकुल, ये मार्केट में देखेंगे तो इस तरह से मिलेगा. अगर इसको स्टोन्स वगैरह सेग्रीगेट कर दें, बाहर निकाल लें, तो इस तरह से मिल जाएगा आपको. तो फ्री फ्रॉम द कंटामिनेंट. तो ये आपको अपने ओन कंसेप्ट में डेवलप करना है. Physicochemical parameters which are responsible for their activity. Moisture content, loss and drying. Moisture content is the estimated by the loss and drying at 105 degrees centigrade. Loss of water content plus volatile matter.
less moisture contents keep the product free from the microorganisms. मॉइस्चर कंटेंट्स तो सभी लोग जानते हैं कि मतलब जितना वाटर है कंटेंट होगा वो उसका मॉइस्चर कंटेंट है। तो यहाँ पे मीनिंग हमारा क्या है कि जब हम इसको एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम लोग ओवन में करते हैं। तो ओवन में क्या हमारा वाटर भी लॉस होता है, वोलाटाइल ऑयल कंटेंट भी लॉस हो जाता है जो ड्रग का है। तो उससे होता क्या है, अगर वोलाटाइल ऑयल कितना था वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या मॉइस्चर कितना था एग्जैक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ हमारे पास मेथड्स है। वोलाटाइल ऑयल कंटेंट जो है क्लेवेंजर अपरेटस से हम निकाल लेंगे। तो वोलाटाइल निकालने के बाद में क्या होगा, जो परसेंटेज आएगा वो मॉइस्चर कंटेंट में से माइनस कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट वाटर कंटेंट आ जाएगा। विश्वास नहीं समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? केमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एग्जैक्ट वाटर कंटेंट निकालना है तो आपको वोलाटाइल का परसेंटेज इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर अगर मॉइस्चर कंटेंट की बात करें, अगर लास्ट ऑन ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है। लास्ट ऑन ड्राइंग का मतलब आफ्टर ड्राइंग के बाद में लास्ट कितना हुआ, वो चाहे आइदर एसेंशियल ऑयल हो, कोई आपका और कोई लास्ट हो रहा है, वाटर हो रहा है, तो वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है दोनों। टोटल एस हम लोग क्यों करते हैं कि जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो कितना उसमें है, जो प्लांट ड्रग हम ले रहे हैं जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कितना है, वो इतना इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के लिए भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उनका परसेंटेज कैसे हमें पता चलेगा कि इस ड्रग में कितना है। उस ड्रग को करने के लिए हम टोटल एस करते हैं। टोटल एस के बाद में हम एसिड इंसॉल्युबल एस इसलिए करते हैं कि उसमें कितना इम्प्योरिटी था वो ड्रग में। जैसे कोई सैंड है तो वो कितना है, कितना परसेंट सिलिका है उस ड्रग में कहीं से मिलाया हुआ, वो कितना परसेंटेज है। तो इफ वी रिमूव द percentage of acid insoluble S from total S, then we get the micronutrients. समझ आए? अगर हम टोटल एस का जो परसेंटेज है वो टोटल एस से माइनस कर देंगे तो क्या करेंगे, हमें टोटल न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना परसेंटेज इसमें हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जो भी उसमें प्लांट ड्रग में होगा वो उसका परसेंटेज पता चलेगा। ये हम परसेंटेज क्यों पता कर रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है हमें पता करने का? टोटल है, एक तो प्योरिटी हमें पता चलती है। हाँ, हाँ डाइजेशन है। दूसरा क्या है हमारा है कि बॉडी में जैसे फिजिशियन है ना, आपको लिखता है ना जैसे आपको चोट लग गया तो कैल्शियम ज़्यादा होना चाहिए, तो वो उन प्लांट को सेलेक्ट करेंगे जो ड्रग में कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा हो। ठीक है, अगर जिंक की कमी है बॉडी में तो वो उन प्लांट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें जिंक का परसेंटेज ज़्यादा हो। वो कहाँ से मिलेगा, इन वैल्यू से हमें मिलेगा जब हम इसकी एस का फिर आगे एनालिसिस करेंगे। मतलब इसमें हमारे पास आगे एस करने के बाद हम दिखाएंगे, हमारे पास एनालिसिस हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ICPOS है, इंस्ट्रूमेंट है या डबल एस है, उसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा इसमें कौन से मिनरल्स है। तो वो आपके उसमें नॉमिट हो जाएंगे। तो ड्रग जो हम रिकमेंड करेंगे तो उस ड्रग में ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए तभी वो इफेक्टिव होगा। वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव एंड एल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव। वाटर soluble extractive means the polar compounds which come in the extract। जो वाटर के साथ में जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जितना भी पोलर कंपाउंड्स हैं वो हमारे आ जाते हैं। और एल्कोहल में नॉन पोलर और पोलर दोनों टाइप के, मीडियम पोलर जो भी है उस टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, जैसे इंफ्राक्विनोन्स हो गया, एल्कोहाइड्स हो गया, ट्राइटरपीनवाइन्स हो गया। तो ये चीज आता है, उससे क्या होता है उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है। वी आर नोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग। तो हमारे फार्मेकोपिया में क्या है, तीन कैटेगरी है मेन, आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ वी आर चेकिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर soluble and alcohol soluble. Identity we can check by the microscopy and PLC chromatography. And purity we can check with the help of foreign matter, total as acid insoluble। तो ये पैरामीटर्स हैं जो मेन हमारा फार्मेकोपिया का कंसेप्ट है।
उसमें 3 ही पॉइंट ध्यान रखना है, आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो फॉर दैट पर्पज वेयर वी हैव गेट द एक्टिव constituents इन द फॉर्म ऑफ solubility, जो उसका स्ट्रेंथ होगा, घनत्व होगा, वही उसकी एक्टिविटी एफिकेसी से रिलेटेड होगा। अभी इसमें वाटर सॉल्युबल और अल्कोहल सॉल्युबल को मेजर कोई डिफरेंस है, कोई बता पाएंगे? हाँ, मोस्ट पोलर आ जाएंगे। वाटर एक इसलिए भी करते हैं, जो हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो अल्कोहल में नहीं जाए, उसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना वो हमारा वाटर में आए। तो उससे इसलिए वाटर भी हमें जरूरी है कि कितना उसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट था वो भी हम उसमें निकाल सकेंगे, कि जैसे हमारा मेटल जो भी है वो सब हमारे वाटर कंटेंट में आ जाएगा। हाँ, नहीं सर, ऐसा नहीं है। इन ट्रेडिशनल मेडिसिन देयर इज ए 3 टाइप्स ऑफ। हाँ, ऐसा है, राइट। एक्चुअल में कंसेप्ट यही है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का, कि जितना भी उसका एक्टिव है वो वाटर कंस्टेंट में आ जाता है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जैसे हम कोई चीज़ खाना खाते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, तो हम इसमें लेते व्हीकल क्या होता है? वाटर। आप जो भी चीज़ खा रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो मोस्ट पोलर चीज़ ले रहे हैं, खाना है या कुछ भी आप देख लीजिए, तो वो इजीली आपको डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, बॉडी में जा रहा है। आप कोई चीज़ ऐसी ले लीजिए जो कम एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे अल्कोहल कंटेंट लेते हैं, तो अल्कोहल का कंटेंट जो है वो उतना एब्जॉर्प्शन नहीं है इन कंपेयर टू द वाटर। और वाटर में क्या है? ऑल टाइप ऑफ द कंपाउंड एक्सेप्ट नॉन पोलर। अगर आप कहें तो नॉन पोलर का कम जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा जाता है, इसलिए हमने 2 कंसेप्ट रखा है। अभी आयुर्वेदा में हाइड्रोक्लोरिक भी अलाउड है, अल्कोहल भी और वाटर भी, तो तीनों अलाउड है। ये टीएलसी का मेथड है, थोड़ा अभी टाइम के लिए थोड़ा बताया है थोड़ा। ये टीएलसी मेथड क्या है? इसमें क्या है कि जैसे आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, तो जस्ट यू सी द बर्बेरिन, ये होम्योपैथिक ड्रग है, चिलिडोनियम मैजस। इसमें क्या है कि जैसे ये बर्बेरिन हमारा नीचे बैठा हुआ है, तो ये सॉल्वेंट सिस्टम ओके नहीं है। डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट होता है। पोलरिटी आप बढ़ाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, जैसे इसमें बढ़ाया थोड़ा पोलरिटी तो ऊपर स्पॉट आया। अभी इसमें और थोड़ा पोलरिटी बढ़ाया तो ये मिडिल में आ गया। तो जो भी है, तो 0.5 आर की अगर हम स्पॉट रखते हैं तो बेस्ट साइलेंस सिस्टम होता है। यहाँ पे जस्ट मैं यही तो करना चाह रहा था। ये हमारे पास में एक पीएलसी है जो डेवलप किया हुआ है लेबोरेटरी में, ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटल केस स्टडी है। ये देखिए टीएलसी डेवलप किया, अच्छा फिंगरप्रिंट है, ये भी किया, अच्छा फिंगरप्रिंट है, लेकिन इसमें कमियां हैं कुछ। कमियां क्या है? जस्ट दे हैव नॉट क्राफ्ट द टीएलसी प्लेट इन प्रॉपर वे। देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कम करना चाहिए था, इन्होंने क्रापिंग यहाँ गलत कर दी। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्रापिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और यहाँ पे डेवलप किया है, इसमें क्या है? ये ऑयल है, तो ऑयल के आपके कर्विंग बैंड आनी चाहिए, ये चीज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल। कोई भी ऑयल होगा तो आप आइडेंटिफाई करोगे इसमें फिक्स ऑयल है या एसेंशियल ऑयल है, इसके आइडेंटिटी के लिए यूज करते हैं। एक ये टीएलसी है, ये इसमें टीएलसी फिंगर परबेरी सरिस्टाटा, उसी देखिए जो बैक टीएलसी हमने प्रीवियस दिखाई थी, प्रॉपर से 0.5 आरएफ के बीच में ये बर्बेरिन आ रहा है स्टैंडर्ड के साथ में, तो ये एक अच्छा टीएलसी डेवलपमेंट है। एक ये हमने स्टडी किया है, 3 ड्रग का है, कैरी कैरिसा है और जुबलेंस है और इन्फोर्बिया है। तो ये जो पीएलसी फर्स्ट है कैरिसा की है, 2-4 प्लेट्स हैं, ये जुबलेंस की है और ये इन्फोर्बिया की है। तो देखिए कितनी बढ़िया और शार्प पीएलसी प्लेट्स आ रही हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपका पर्टिकुलर प्लांट ड्रग का, अगर ये हमने फिंगरप्रिंट किया है, जब दोबारा रिपीट करूंगा इसी टाइप का फिंगरप्रिंट मिलेगा। जो मार्केट से सैंपल लाना है कोई, अगर वी कैन मैच विद द मार्केट सैंपल टू दिस रेफरेंस मटेरियल, then definitely we get these type of fingerprint, then we can the मतलब material is okay, otherwise
it is the fake material if it is not matching this one fingerprint. ये अभी एक वेटलेस हमने पब्लिश किया था 2016 में. We have developed this one Bilba means the agile marvelous PLC. So you see the each fingerprints are very sharply separated with the each RF value. These types of fingerprints is required for identification purpose. एक एग्जाम्पल है कर्कुमा लौंगा का जस्ट हम देने जा रहे हैं. ये हमने माइक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक में आपने देखा होगा. बस केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यू सी इन द येलो कलर्ड स्पॉट मीन्स सीसी. ये इट में बी द कर्क्यूमिन और अल्फा कर्क्यूमिन का जो आयन होता है वो इसकी रिप्रेजेंट करता है कि इसमें ये येलो सेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए. ये जो डार्क है ये ब्लैक है ना, ये भी येलो सेल, ये येलो कलर सेल्स है. वही अल्फा या टर्मिनोन या कर्क्यूमिन का रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. ये टीएलसी फिंगर का कर्कुमा रंगाता है. ये यहाँ पे 3 कर्क्यूमिन के जो एक साथ मिक्स हो रहे हैं. अल्फा मतलब कर्क्यूमिन का जो स्टार्ट है कर्क्यूमिन डी मिथाक्सी कर्क्यूमिन एंड बिस मिथाक्सी कर्क्यूमिन. इनको फर्दर हमने स्टैंडर्डाइज किया. तो आयुर्वेदा फार्मेकोपिया, यूनानी फार्मेकोपिया, सिद्धा फार्मेकोपिया, होम्योपैथिक एंड आईपी फार्मेकोपिया, इंडियन फार्मेकोपिया. these are the all having the similar value. There is a no difference. So the product is harmonized. मीन्स सभी फार्मेकोपिया में एक जैसी वैल्यू मिलती है. तो ये हमारा बहुत अच्छा हार्मोनाइजेशन का एग्जाम्पल है कि हमें एक वी कैन अडॉप्ट इन द नेशनल वे वन हर्ब वन स्टैंडर्ड. एक हर्ब के लिए एक स्टैंडर्ड सभी फार्मेकोपिया. प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर्स थोड़ा डिफरेंट है. इसमें होम्योपैथिक के लिए स्पेसिफिक है ये जो है. और आप लोग भी इसको समझ लीजिए. कोई ड्रग है, अगर हमने कोई मदर टिंचर बनाना है तो कर्कुमा लौंगा कोर्स पाउडर को 100 ग्राम लिया, 400 वाटर में लिया. टोटल स्ट्रांग अल्कोहल हमारा 635 ml बना दिया. इसको बनाने के बाद इसका स्टैंडर्डाइज किया. तो ये हमें क्या करना होता है, जब भी कोई भी स्टैंडर्डाइज करना है प्रोडक्ट को, तो इन हाउस के 2 सैंपल हम लोग करते हैं. फिर मैन्युफैक्चरर 1, मैन्युफैक्चरर 2, मैन्युफैक्चरर 3 ये मार्केट के सैंपल लेते हैं. उनके बाद में हम ये पैरामीटर सेडिमेंट्स कितना है, पीएच वैल्यू, टोटल सॉलिड वेट पर एमएल, अल्कोहल कंटेंट कितना सभी का आ रहा है, उसके अनुसार हम ये लिमिट फिक्स कर लेते हैं कि भाई ये वैल्यू जो है इस रेंज में आ रही है. ऐसे ही आयुर्वेदा में क्या करते हैं, हमें मिनिमम 3 बैच के सैंपल चाहिए होते हैं टू फिक्स द लिमिट इन द फार्मेकोपी. इन हाउस के लिए भी यही रूल है. अगर आपके पास कोई फार्मेकोपिया में मेथड नहीं है तो यू कैन डेवलप योर ओन हाउस एंड एट लीस्ट मिनिमम ऑफ 3 जियोग्राफिकल लोकेशन सैंपल. इन होम्योपैथी ये मैं बता रहा था कि अप टू 6x मीन्स पिकोग्राम टू पावर 10 to power 12 we can characterize here, but below this dilution we can't characterize. कोई होम्योपैथिक है, डाइल्यूशन है, और अगर 6x तक है हम तो कर लेते हैं उसको करेक्टाइज. लेकिन अगर इससे ज़्यादा डाइल्यूशन है, जैसे 200 या CH तक का है, तो वो कैसे हम करेंगे तो करेक्टाइज नहीं कर पाएंगे ना. तो फॉर दैट पर्पज वी आर गो फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी. बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर उसकी आ रही है तो मीन्स वो ड्रग उसमें है. राइट. हाँ. 12 CH we not get any content in this one. नहीं, wait, wait. It may be the content, but we have no techniques to identify that one. Where the hypothesis. हाँ. Here we have 4 types of therapeutic markers for phytopharmaceuticals. So next speaker will cover this. So I am not going to detail. Isolation of carcinoids from the curcuma longa we have isolated in our laboratory. Very simple way. You run the TLC plate, separative TLC plate, and get the 3 bands very having good RF differences in the good RF values. Here the curcumin, then D-methoxycurcumin and bis-methoxycurcumin. Here you see the
single spot. Here, this is the mixture of the all three plant drugs. This is the curcumin, yeah, dimethoxycurcumin and bis dimethoxycurcumin. अभी क्या इशू है, जैसे आप कोई लैब में कोई वर्क कर रहे हैं, अगर आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है, तो फॉर दैट पर्पज यू गो फॉर द प्रिपरेटिव टीएलसी। बहुत फास्ट टेक्निक है, आप प्रिपरेटिव टीएलसी लगाइए और उसके बैंड स्केच कर लीजिए, आपको प्योर कंपाउंड मिल जाएगा। उस कंपाउंड की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि वो कितना उसमें प्रेजेंट है। उसके लिए क्या, जो आपको पहले अगर नोन है तब तो आपके लिए इजी है। जैसे ये हमारे लिए नॉन कंपाउंड थे सभी, तो हमने उनका स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा ये सब मैच करा लिया, तो पता था कि मालिक अगर नोन है तो आपको एनएमआर करना पड़ेगा, मास लेना पड़ेगा, यूवी करना पड़ेगा, एफटीआईआर करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा। देन यू कैन फिक्स दिस वन टू गो है। ये जियोग्राफिकल वेरिएशन है जो अभी हम बता रहे थे कि अगर आपको कोई सिंगल प्रोडक्ट है और आपके फार्माकोपिया में नहीं है, तो हाउ कैन यू स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इन हाउस। So at least three locations, geographical locations is required to standardize the product. Yeah, for physicochemical parameters, one sample is taken from Dehradun, another from Bhubaneswar, another from Tarikesh. Here you see the values which are nearby this one, so we can fix the values. But we have the much more differences like this one. Total as the three from the Dehradun samples, and other one is having 8 or 9. Then at the time of fixing in-house limits, we omit this value. अगर हमारे पास कोई सैंपल नहीं है तो हम एक वैल्यू को ओमिट कर देंगे, बाकी दो के बेसिस पे हम वी कैन फिक्स द लिमिट। अदर रिक्वायरमेंट्स में हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स में लेड 10 ppm, आर्सेनिक 3 ppm, कैडमियम 0.3 ppm एंड मर्करी 1 ppm। ये लिमिट्स बाय decided by the WHO and our IPI also it is mentioned. And analysis of pesticides by GCMS method. Our next speaker will explain this one. Limits already given in the pharmacopoeia. Aflatoxins B1, B2, G1, G2. Our combination is not more than 5 ppb. Otherwise, sample will be failed. As a government analyst, uh, we have under this section of the Drug and Cosmetic Act, some government has nominated some government analysts in the each for each laboratory which act as a under government Drug and Cosmetic Act. In Pharmacopoeia Commission, there is a two government analysts, one from my here, one from chemistry side and one from pharmacognosy side. अब आपको ये है, ये फॉर्म 1A है। ये फॉर्म 1A क्या है, एफिलिएट लेबोरेटरी के लिए क्या होता है कि इसमें ये जो ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल लेते हैं वो इसको भर के हमारे पास में भेजते हैं फॉर्म 1A। तो उसमें क्या है, उनको एक ऑफेंस लिखना पड़ता है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस एलिगेशन, यहाँ पे नंबर रूल उनको कोट करना पड़ेगा। वो स्पूरियस है या अडल्ट्रेट ड्रग है या मिसब्रांडेड ड्रग है, तो उस कैटेगरी को इनको लिखना पड़ेगा। उसके अनुसार फिर यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा, वो अपनी रिपोर्ट उसको उस फॉर्मेट में देगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है वो फॉर्म 18A होता है। और जो रिप्लाई यहाँ से रिपोर्ट टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट जाएगी वो फॉर्म 2A में जाएगी। गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर्म 2A में रिपोर्ट भेजेगा और उसमें जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर्स होगा वो उसमें वहाँ पे मेंशन करेगा कि ये स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग है। कोर्ट को जब रिप्लाई यहाँ से बन के जाए, ऐसे ही ये फॉर्म 13A में वो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जब रिपोर्ट जाएगा, ये अपीलेट के अलावा अपीलेट का सैंपल 1A में आएगा और 2A में जाएगा, और जो विदाउट अपीलेट होगा वो जो ड्रग इंस्पेक्टर भेजेगा स्टेट लेबोरेटरी को, वो 18A में भेजेगा और 13A में रिप्लाई जाएगा। ये इस पे भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पूरा आपका वो लेक्चर होगा, उसमें वो बताएंगे डॉक्टर साहब जो आएंगे। ये अडल्ट्रेट ड्रग्स के बारे में जो अभी डिस्कस कर रहे थे, जस्ट यू सी था ना, पेपर और काली काली मिर्च का एग्जाम्पल है, ब्लैक पेपर का
अगर आप मार्केट में जाते हैं तो उसमें दोनों मिक्स है, तो आप वाटर एक ग्लास लीजिए, उसमें भलेंगे तो पपाया सीड से फ्लोटिंग ऑन द टॉप, वो ऊपर आने लगेंगे। तो इसको आपको एग्जाम्पल यू कैन सी इन द योर ओन हाउस। ये कुछ हमारे स्टडी हैं, जस्ट like the paracetamol and diclofenac sodium adulterate in the herbal painkiller capsule। एक पेन किलर कैप्सूल है, उसमें अभी इस टाइप के प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो अडल्ट्रेट कर देते हैं विद द एलोपैथिक टू इनहेंस द एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हाउ कैन यू चेक इन द लेबोरेटरी? तो आप लेबोरेटरी में यहाँ पे चेक कर पाते हैं। तो इससे हमारे देयर इज ए टू टेक्निक्स अवेलेबल इन आवर लेबोरेटरी, हियर वन एचपीटीएलसी एंड वन एचपीएलसी। एचपीएलसी में भी हम देख ओवरलैप कर लेते हैं, अगर मिक्स है तो ओवरलैपिंग पीक आएगी, और एचपीटीएलसी में भी आरएफ सेम आ जाएगी। तो एंड वी मैच विद द स्पेक्ट्रा, अगर वो स्पेक्ट्रा भी ओवरलैप हो गया तो मीन्स दिस कंफर्मेशन कि ये ड्रग अडल्टेड बाई दिस स्टैंडर्ड, जो भी वो स्टैंडर्ड बनाते हैं। इस तरह से आपको अपने लेबोरेटरी में भी चेक कर सकते हैं कहीं पे भी। एनिमोस्लाइड है, हर्बल किलर पेन कैप्सूल में है, फिल है, ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। एक स्टेरॉयड, आजकल स्टेरॉयड बहुत मिला देते हैं, स्टेरॉयड को हम कैसे चेक करेंगे वो भी हमारे पास में कैच आउट है। एंड कंक्लूजन मीन्स द क्वालिटी इज नेवर द एक्सीलेंट, इट इज ऑलवेज ए रिजल्ट ऑफ द इंटेलिजेंट एफर्ट। मीन्स हर केस में आपको अपना एक क्वालिटी को कंफर्म करना है। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग द क्वालिटी इन योर लेबोरेटरी, so you are not getting the desired efficacy of the product. This is the team of our dedicated which are working in the our laboratory. Here you can contact and do this. अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो जैसे आप 5 मिनट में बोलिए, उसमें भी है टाइम भाई कि नहीं है? अच्छा। हाँ, तब तक पेन ड्राइव लगाओ, डॉक्टर साहब की, जब तक हाँ अगर आपका कोई क्वेरी है तो पूछिए। हाँ। राइट, वेरी राइट, वेरी एक्चुअली now these days fresh plant material having been they start sunlight, you know, so maximum industry people are using dried plant material. But in monographs in the pharmacopoeia we have mentioned the someone cases is fresh. If we match the standards with the fresh, then it will be fake, मतलब not having the sub standard category। हाँ, तो ये एक इशू है। योर क्वेश्चन इज, हाँ बहुत ज़्यादा। ओके, ठीक। नहीं करेगा वो। हाँ, तो आपका अपना क्या डिजीज लैब है ना, जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी आपकी होगी, जो आपने स्टेट की, आप वो सैंपल वहाँ पे भेज दीजिए। तो वहाँ पे जो हमारे मेथड्स हैं आइडेंटिफिकेशन के, जो आईपी में भी दिए हुए हैं, हाँ, सबके रन करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो कह नहीं बता पाएंगे। अरे डॉक्टर साहब, उतना हर एक पास में वो नहीं चीज़ है ना, बड़ी लेबोरेटरी वहाँ पे जो है ना, हमारी जो डिटेल लेबोरेटरी है उनमें बहुत छोटे सेटअप है।
नहीं पहुंचे। हाँ, वहाँ वो तो ठीक है, एडवांस में है, लेकिन अभी वो सिंपल के लिए टीएलसी मैच करके देख लेंगे, उनको मिल जाएगा। हाँ, फार्मेको पे उतने सिंपल मैच नहीं करेंगे। हाँ, आपकी वैल्यूज भी डिफरेंस आ जाएंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट। हाँ, नहीं सर, नहीं क्वेश्चन वो नहीं है सर, क्वेश्चन वो नहीं है, अडल्टेंट का क्वेश्चन है। the question is related to the adulterants, simple adulterants say painkiller, तभी someone has adding the paracetamol in the herbal capsule, then how you can catch out in the laboratory? हाँ, वही 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 सिंपल, वही 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 सिंपल। हाँ, कार्बामेट्स के लिए भी नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर्स है ना सर, बट हमारे जीसीएमएस एमएस में ऑल द टाइप ऑफ कार्बामोट्स। हाँ, नहीं एसपीएलसी आइदर एलसी, वी आर यूजिंग एलसीएमएस एमएस। Some carbamates we are doing here by GCMS also here. We saw today, we saw today in our laboratory. We will show you today. थैंक यू, आप लोगों ने इतना सुना। This is second lecture of this today. I think this is also lecture of chemistry. So I think it will not be going a double dose for you. I will take care of this. Hello? हाँ बोलो। lecture में आप रुक जाओ। So, आपके लिए डबल डोज ना हो थोड़ा सा ये, क्योंकि इट विल so it cannot be a lecture, it should be an infection, because you all are 100% of your field. So just I'm just a little bit knowledge of that spectroscopy and chromatographic technique which I'm going to share you today. Okay. जितना आप बताएंगे उतना मैं थोड़ा डीप जाऊंगा कम्युनिकेशन में, अगर नहीं आप चाहते हैं तो उतना नहीं जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर बोरिंग नहीं करेंगे इसको, आप बीच में पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। कि ये बहुत हम वन वे कम्युनिकेशन हम लेक्चर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आगे आपको जितना एडवांसमेंट है, ठीक है, लगभग आप टेंडम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो किसी ने अभी बात की है, क्रोमेटोग्राफी की बात होती है, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक इंक्लूड भी हो गई है, ठीक है। तो अगर हमारी फार्माकोपी पे लुकिंग अवर फार्माकोपी, देयर इज समथिंग we are still missing in that pharmacy, that is the marker based standardization. Okay. Already our two volume 8 and 9 that is published recently, that are included in the marker based standardization. But to get marker compound of all drugs, it's very tedious task here, because marker compound present in the plant material is a very complex mixture, ठीक है। तो make available of this marker compound is very tedious task, it's not easy, ठीक है। अगर आप सिग्मा पे कहीं जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे नहीं सभी प्लांट पे, और फिर भी एक प्लांट है जैसे बहुत से मार्कर हैं, जैसे आप गेलिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो
भी ऐसा होना चाहिए इजीली आइडेंटिफिएबल। इसका मार्कर की डेफिनेशन ही यही है कि इट शुड बी इजीली आइडेंटिफिएबल, क्योंकि उसके करेक्टरिस्टिक हैं ऐसे होने चाहिए जो उसको आइडेंटिफाई कर सकें एज ए मार्कर। So जैसे कि चाइना है, चाइना इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द रिसर्च साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस इन द देयर इन द herbal medicine. Somewhere we are lacking for that because some of the drugs are like Chavanpura that are in foreign country they are treated as a food supplement, not as a drug. ठीक है, a lot of debate is also going on between the chemist and scientific staff and the other person. They are saying that the market is not required for the efficacy. There are a lot of debate that I will not go on that debate. Okay, but whatever the things we are, I will show you. There's a lot of debate. The marker should not be there. Marker should be there. A lot of debate on this. Still is going on. Okay, so one by one I will discuss the scenario that already known. The what is the importance of urban is growing. Okay, day by day, and the time of this night urban as per the international requirement. So what is the international requirement? Well documented traditional use, standardization based on the chemical marker, activity profiling, medicinal plant free from pesticide, heavy metal, stability, and safety issues. Okay. Previously, the safety was not included in our pharmacopoeia. Okay, but due to looking on the importance of the safety profiling, that also included later on, like a aflatoxin analysis, pesticides, heavy metal, and microbial load. Sorry, नहीं उन्होंने जनरल टर्म दे दिया, वो है एक ही बायोलॉजिकल, अभी उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट है वो है हम लोग जो क्या करते हैं फार्माकोपिया में। ठीक है, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव है, जो आप लोग कई लोगों ने डिस्कस भी किया होगा आपको। ठीक है, अगर हम अपने मेन कंपोनेंट देखते हैं, अगर मोनोग्राफ का मेन कंपोनेंट देखते हैं, तो अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो इन चार 5 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं फार्माकोपिया को। क्वालिटी कंट्रोल, आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, एंड सेफ्टी प्रोफाइल। ठीक है, ये मेजर कंपोनेंट है अवर फार्म, किसी भी फार्माकोपिया के मेजर कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, चाहे आपकी ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, कोई भी हो, लगभग मेजर कंपोनेंट यही मिलेंगे आपको हर फार्माकोपिया के। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, किस तरीके से हम ड्रग को जो है टू असर्टेन द एफिकेसी ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो द करेक्ट सप्लाई ऑफ द करेक्ट प्लांट मटेरियल वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो उसमें एचपीटीएलसी है आपकी, जीसी से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोपी है। ठीक है, वो ऑलरेडी हमारे कलीग ने डिस्कस किया है। ठीक है, प्यूरिटी में भी आपको टोटल एस अभी बात करते हैं, इसमें टोटल एसिड इंसॉल्वेंट स्ट्रेंथ में एक्सट्रैक्टिव की हम बात करेंगे नहीं, कि हम फुल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे। एचपीएलसी है जैसे आप कर रहे हैं, एचपीएलसी से भी कर सकते हैं, एचपीएस जीसी जीसी में लुकिंग ऑन द प्रोफाइलिंग ऑफ द फाइटोकेमिकल प्रेजेंट इन प्लांट हर्बल ड्रग। फिर सेफ्टी है, प्रोटॉक्सिन है, एचपीएलसी से कर रहे हैं, यूपीएलसी से कर रहे हैं, पेस्टिसाइड है, जीसी जीसीएमएस है। ठीक है, हैवी मेटल है, आईसीपी है, आईसीपी है, माइक्रोबियल लोड है, ये सब सेफ्टी प्रोफाइलिंग के पैरामीटर। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने बताया बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं प्लांट में। ठीक है, बड़े मतलब माइनर का आइटम, मेजर कुछ मेजर भी होते हैं, बहुत सारे माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट, उनको आइसोलेट करना, उनको एक आपको एक पीआरएस फाइटोकेमिकल रेफरेंस स्टैंडर्ड के रूप में उनको तैयार करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, इसके ऊपर लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज और मैन पावर चाहिए आपको। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक क्या है एक्चुअली, है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये जो है इलेक्ट्रो, थोड़ा सा बेसिक है, अगर बहुत सारे केमिस्ट्री पर्सन को पता भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मली बता रहे हैं कि जनरल स्पेक्ट्रो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन विद मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर, ये भी मैटर है, ये भी मैटर, हम भी मैटर हैं एज ए केमिस्ट्री में। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ रही है कहाँ से, सन से आ रही है, ये भी एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, ये एक इंट्रैक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियाई से। ठीक है, सिंपल आपने सब लोगों ने देखी होगी ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, जो आपकी एक्सरे जो है वो भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। ठीक है, आपका अल्ट्रासाउंड है, दैट इज आल्सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। आपकी एमआरआई है, आल्सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। एनएमआर, एमआरआई, दीज आर द सिमिलर थिंग्स, प्रिंसिपल इज आल्सो सिमिलर। ठीक है, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये वेवलेंथ है, ये यहाँ पर जब वेवलेंथ जब बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है उसकी कुछ। ठीक है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी होगी, इधर लो फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि इधर वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तभी आप जो रेडियो वेव आप सुन पा रहे हैं, गाने सुन पा रहे हैं, ये सब हाई वेवलेंथ पे आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट वेव में, लॉन्ग वेव, गाना सुन पा रहे हैं दूर से। आपने कभी एज्यूम किया है कि आईआर जो हमारा रिमोट है, इसमें क्या फिट होता है? आईआर रेडिएशन होता है ना, इसमें हम लोग रिमोट ऑपरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए।
अगर आप इस वेवलेंथ को आईआर में फिट करेंगे तो हो सकता है कि आपको 3 किलोमीटर से भी ऑपरेट कर पाएँ, ठीक है, रिमोट से कोई भी टीवी, ठीक है। ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी कितनी है, कौन-सी वेव आप यूज़ कर रहे हैं उसमें। इसलिए आईआर को आप सिंपली हम यहाँ से टीवी चला पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी स्टूडियो में बैठकर कोई हमारी टीवी चला ले, ठीक है। तो उसको इसके लिए उसकी लिमिटेड आईआर उसमें रखा गया है कि हम एक लिमिटेड क्राइटेरिया में हम उस पे काम करें। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब आपको मन में क्वेश्चन आना चाहिए, हो सकता है आया हो, आप लोग पूछ ना रहे हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ भी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्यों नहीं चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? इसकी एनर्जी उतनी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है। जब पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक रेडियो ये फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ को एक मैग्नेटाइज्ड वे में अब हम किसी न्यूक्लियस पे डालते हैं, तब वो वाइब्रेशन करते हैं। अगर किसी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये भी एक एटम ही है, ठीक है? अगर हम आप यहाँ पर कुछ रेडिएशन डालेंगे, ठीक है, इसमें कुछ अंदर होगा, हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। हो सकता है वाइब्रेशन हो, रोटेशन हो, उसमें कुछ भी अंदर होगा। वाइब्रेशन अगर हुआ, मॉलिक्यूल में एनर्जी लो है, ठीक है, वाइब्रेशन कर पाएगा, केवल एटम को इधर-उधर आपको वाइब्रेट कर पाएगा, ठीक है? तो वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज़ कॉल्ड एज़ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है? अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। अगर उसमें रोटेशन हो रहा है, न्यूक्लियस रोटेट हो रही है, तो दैट इज़ द रेडियो फ्रीक्वेंसी एनएमआर जहाँ पे वर्क करता है, ठीक है? तो ये सब क्या है पर्टिकुलर रेडियो पर्टिकुलर वेवलेंथ को, ठीक है? पर्टिकुलर रेडिएशन को जब मैकेनाइज़ वे में हम किसी न्यूक्लियस पे डालते हैं, तब वो ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक कहलाती है। बहुत सारी आपने पढ़ी हुई होंगी आईआर है, यूवी है, एनएमआर है, ये सब हैं, ठीक है? मास है, मास इज़ नॉट ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। क्यों नहीं है? क्योंकि मास में क्या है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इमिशन और वो नहीं हो रहा है। इमिशन एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल नहीं कर रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या है, मास इज़ नॉट ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। जबकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, इमिशन एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ना। मॉलिक्यूल कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कहीं रोटेशन होगा, कुछ भी होगा, तो वो एक ट्रू नहीं है। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही उसको स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में ये सारी हैं, भी 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक में आप मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन मॉलिक्यूल देख रहे हैं कोई, ठीक है? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे डबल लेयर्स है, आप एटम देख रहे हैं, कोई सिंगल एटम है। जैसे आप मरकरी आपसे बात की, हेवी मेटल देख रहे हैं, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है। मास, एनआर, यूरिया है, ये आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेक्निक है इसमें द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है? अब आप आइसोलेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है? आइसोलेशन या इम्प्योरिटीज़ प्रोफाइलिंग कोई अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन में कर रहे हैं, तो आपको एपीआई का आइडेंटिफिकेशन करना है, इसकी इम्प्योरिटीज़ प्रोफाइलिंग करनी है, इसको आइसोलेशन करना है, कैरेक्टराइजेशन करना है। तो मोस्ट ऑफ द वर्क कैन बी डन बाय द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑलमोस्ट मोर देन 80%, ठीक है? अदर टेक्निक आल्सो कैन बी एज ए मतलब सपोर्टिंग टेक्निक लाइक आईआर फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए, या यूपी है उसमें आप क्रोमोफोरिक ग्रुप देखने के लिए, मास उसका मास डिटरमाइन के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक है एनएमआर, न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ग्रुप, जिससे हम लोग अपना मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको बताते हैं, उसका अरेंजमेंट क्या है, किस तरीके से उसकी अरेंजमेंट है। फिर आते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन क्या है, ये कोई बता सकता है क्रोमेटोग्राफी क्या है? थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा सा बोर नहीं होंगे। आपको हो सकता है आता ही होगा सभी लोगों को। हाँ, मतलब हाँ, ठीक है। क्या हुआ कि क्रोमेटोग्राफी की इजाद कैसे हो, कहाँ से ओरिजिन हुई? क्या हुआ, फ़िल्टर कोई भी साइंटिस्ट फ़िल्टर कर रहा था, लगभग 70वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसने क्या किया, कोई पिगमेंट को फ़िल्टर कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे कलर देखे उसने फ़िल्टर पेपर पे, ठीक है? उसने कलर देखे, तो उसने देखा कि कलर अलग-अलग क्यों कलर आ रहे हैं, ठीक है? तो उसने वहाँ पर उसमें देखा, फिर पहला जो नाम दिया था क्रोमेटोग्राफी, टी स्वैट आपने नाम सुना होगा। क्रोमेटोग्राफी के जिन्होंने शायद 18 में आके या 19 में आके दिया था। उन्होंने सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट पर जो है आप शायद पिगमेंट को सेपरेट किया था, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट एज़ ए स्टेशनरी फेज लिया था उन्होंने। तो वहाँ से टी स्वैट का ही नाम आता है क्रोमेटोग्राफी में। लेकिन उससे पहले भी इस पे काम हुआ था, उन्होंने फ़िल्टर पेपर पे कई सारे कलर देखे थे, वहाँ से क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद में इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट हुए, एचपीटीएलसी आप देख रहे हैं, टीएलसी हुआ, उसमें पार्टीशन हो गया। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, जब 2 इमिजिबल लेयर्स हैं, ठीक है? वाटर है, या फिर देखो वाटर में बहुत सॉल्वेंट बहुत नहीं कोई मिक्स होते हैं, बहुत बहुत कम मिक्स होते हैं, मिथनॉल हो जाता है क्योंकि उसकी पोलैरिटी लगभग इथेनॉल की सेम होती है। तो उसमें 2 बाइफेजिक लेयर बनती है। आप वाटर में हेक्सेन डाल देंगे, क्लोरोफॉर्म डाल देंगे, 2 लेयर बन जाएँगे, ठीक है? 2 लेयर बन जाएँगे, उसमें कुछ आप कंपाउंड डालेंगे, ठीक है? कुछ कंपाउंड डालेंगे, स्टेक डालेंगे, तो उसको स्टेक करेंगे, तो स्टेक इटसेल्फ डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है? 2 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी, ठीक है?
थोड़ा सा वो वाटर में जाएगा, थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इस पे भी एक इंस्ट्रूमेंट है, हम आगे डिस्कस करेंगे। उसको शायद आपने नाम सुना, काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी जो इनिशियल स्टेज में एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को बेस था। उसके बाद उसमें एडवांसमेंट हुए, हाई स्पीड काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी बना, फिर एचपीसीसी हाई परफॉर्मेंस काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी बना, ठीक है। बहुत सारे एफसीपीसी बना, फास्ट सेंट्रीफ्यूगल पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बना। उसके बाद में बहुत सारे एडवांसमेंट हुए। तो इसमें साइज एक्सक्लूजन है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स क्रोमेटोग्राफी है, हेलिक्स है, बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी के पार्ट पार्ट हैं। ये सिंपल टीएलसी आप देख रहे हैं, टीएलसी ये कैपिलरी एक्शन है, आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा वो लगा हुआ ग्राफिक्स, किस तरीके बैंड को बैंड सेपरेट होते हैं, ठीक है। टीएलसी पे ये कैपिलरी एक्शन द्वारा सेपरेट होते हैं कि एक मतलब एनालाइट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू फेजेस, वन इज मोबाइल फेज एंड अनदर इज स्टेशनरी फेज। तो किस तरीके से आप टीएलसी इसको रन करते हैं, मोबाइल फेज में कैपिलरी एक्शन द्वारा आपको सेपरेशन होता है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है स्टेशनरी फेज के साथ में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एफिनिटी विद द स्टेशनरी फेज मॉलिक्यूल जो है एनालाइट अपने आप को सेपरेट करता है। ये थोड़ा ट्रबल शूटिंग है, अगर आप ठीक आ रही है या फिर इस तरीके से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब आपको प्रोटीन की जरूरत है, वहाँ पर आप या बेस मॉडिफायर डाल सकते हैं। या फिर आप कभी कभी पेंसिल की इंक कभी मत करिए, पेंसिल का यूज करिए, फिर इंक का भी वो आ जाता है, ठीक है। ये सारी थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग है। एचपीटीएलसी सबने आपने देखी, आप भी देखेंगे भी, ठीक है। एचपीटीएलसी में एक चीज आ गई है, एमएस इंटरफेस उन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है। अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी हमने देखा है वहाँ पर उसकी। एमएस इंटरफेस क्या करता है कि आप अगर वो कर रहे हैं, एचपीटीएलसी करा रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे आप फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अब इस तरीके से ये नीडल है, ठीक है। ये नीडल आएगी, इसके साथ एक नीडल आएगी आपके सॉल्वेंट की पर्टिकुलर स्पॉट को, ठीक है। पर्टिकुलर स्पॉट मीन्स एक कंपाउंड होगा कोई, ठीक है, उसको स्केच करेगा, उसको मास को बहुत कम चाहिए क्वांटिटी में, ठीक है। उसको स्केच करेगा, उसको एसिटोनाइट्राइल मिथनॉल जो भी सॉल्वेंट लेगा उसको स्केच करेगा, इमेज इंटरफेस में भेज देगा आफ्टर एचपीटीएल, ठीक है। तो उसके क्या है, उसका मास आ जाएगा, आपको मास मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको मास आ जाएगा। तो ये आपको स्पेसिफिसिटी आपको जो है डिटरमाइन करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाती है इसमें, मास अगर मास में लगा हो तो मास इंटरफेस इनके साथ एचपीटीएलसी केमिक वालों ने बनाई है, ठीक है। ये मास इसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। कोई भी अगर आप इसकी भी स्केच करना चाहें, जैसे ये स्पॉट है, ठीक है, इन्होंने इसको स्केच किया, इसका मास ये आ गया, तो मतलब ये आप दिखा सकते हैं कि हाँ इसका मास 320 है, तो ये कंपाउंड है इसमें। तो अभी इसका एक एचपीटीएलसी का एडवांटेज है। व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ द एचपीटीएलसी, अगर आप फार्माकोपिन देखें क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, ठीक है। हमारे हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे आपको बैंड है, ठीक है, बॉटम से 10 डिस्टेंस तो 10 mm होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो प्लेट है 10 सेंटीमीटर रन होनी चाहिए, तो सॉरी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पॉट टू स्पॉट डिस्टेंस आपके 11 सेंटीमीटर, पॉइंट पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट देते हैं इसमें। 10 सेंटीमीटर होने, बैंड आपका 10 mm का होना चाहिए। दीज आर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। आपको टीएलसी प्लेट अच्छी प्लेट है, अगर फार्माकोपी आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लगभग हम लोग ये फॉलो करते हैं। अब ये एक डिफरेंस है एचपीएलसी एंड एचपीटीएलसी में, ठीक है। एचपीटीएलसी थोड़ी सी इकोनॉमिकल है, आप अपनी मतलब आप प्लेट बना भी सकते हैं, ठीक है। आप रेडीमेड प्लेट ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है, इकोनॉमिकल पड़ती है, फास्ट है, लेकिन रेजोल्यूशन उतना कम है, ठीक है। अभी जैसे इसमें आप देखेंगे इस प्लेट में, ये सेम सेम प्लेट है, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे आपको मेजरली स्पॉट जो दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। एक ये स्पॉट, दो, तीन, चार, फोर, फाइव, लगभग 5 स्पॉट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं आपके 5 स्पॉट हो, ठीक है, 5 ही कंपाउंड हो। आपके स्टेट में बहुत नंबर ऑफ कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कैथनत्र जिस एल्कलॉइड में मोर देन 500 एल्कलॉइड है उसमें कैथनत्र में, ठीक है। 1000 कंपाउंड होते हैं एक प्लांट में। तो इसकी लिमिटेशन इतनी है कि ये इतने डिस्टेंस पे आप कितने कंपाउंड सेपरेट कर पाओगे। अब यही देखिए एचपीएलसी में इतने, इसमें आपको कितनी सारी पीक दिख रही है, ठीक है। इट मे बी इम्प्योर और प्योर, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो तो आपको स्पेक्ट्रल प्योरिटी आप लेंगे तो पता चलेगा, लेकिन आपको लगभग इतने कंपाउंड तो है ही है इसमें, ठीक है। इससे ये पता चलता है जो कि यूवी यूवी या पीडीए में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे कंपाउंड भी होंगे जो यूवी एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, जिनके लिए आपको अलग डिटेक्टर यूज कर रहे होंगे। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, मतलब ये बहुत ही ट्रांस सिस्टम है, वेरी डाइवर्सिफाइड, ठीक है।
उसमें आप कितने कंपाउंड हैं, आप पता नहीं लगता। जैसे एल्कलॉइड की स्क्रीनिंग जब सिंथेसिस हुई थी तो 700-800 एल्कलॉइड उसमें पाए गए। ठीक है, उसमें विनिगा रुबिका एल्कलॉइड के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो मोर देन 200 मोर देन 500 अमाउंट में वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं प्लांट सिस्टम में। कुछ मेजर होता है उसमें, कुछ माइनर। ठीक है, ये एचपीएलसी के इनर मैकेनिज्म है, कैसे एचपीएलसी वर्क करती है। आप अगर यहाँ सुनना चाहते तो यहाँ बता देंगे, आप वहाँ पर लैब में आएंगे वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है सिलिका जो होता है ना, सिलिका जो अभी पीएलसी प्लेट अभी नॉन पोलर है, उसमें SiO2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, पोलर होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो नॉर्मल फेज कहलाती है। जब आप उस OH ग्रुप को ब्लॉक कर देते हैं C18 चेन द्वारा, तो C18 रिवर्स फेज कहलाती है। ठीक है, उसमें ये जो कंपाउंड देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, स्लो चल रहा है, इसकी एफिनिटी इससे ज़्यादा है, ये देखो फास्ट जा रहा है। ठीक है, ये इसमें C18 में तो ये रिटर्न नहीं हो रहा वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा पोलर होगा, ये उससे कम नॉन पोलर होगा, क्योंकि C18 में ये इंटरेक्ट कर पा रहा है सही से सिलिका से। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? C18 C8 का मैकेनिज्म क्या है, आप पूछ सकते हैं इसे, मतलब नहीं समझ में आया। जो सिलिका है, उसमें SiO2 होता है, SiOH होता है। ठीक है, वो वो पोलर होता है। ठीक है, जो टिल्सी प्लेट अपनी नॉन नॉन वो पोलर होती है। ठीक है, नॉर्मल फेज, वो नॉर्मल फेज कहलाती है। जब SiO2 को ब्लॉक कर दिया जाता है लॉन्ग चेन C18 चेन के द्वारा, लंबी लंबी चेन लगा दी जाती है, तो इट बिकम हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, जो क्रोमेटोग्राफी का थंब रूल क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे मतलब हमें जैसा लोग हैं वैसे पसंद आएंगे। ठीक है, यही क्रोमेटोग्राफी रूल है कि लाइक डिजोल्व लाइक। तो क्या करता है कि नॉन पोलर जो स्पेसिफिक फेज है वो नॉन नॉन पोलर कंपाउंड को ज्यादा रिटेन करती है, यानी पकड़ के रखती है। ठीक है, अगर हाइड्रोफोबिक नेचर में, तो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड को ज्यादा पकड़ के रखेगी, उसकी एफिनिटी उससे ज्यादा होगी। ठीक है, इन कंपेरिजन टू नॉन, मतलब पोलर एनालाइट। तो इसकी ये मैकेनिज्म, ये कुछ आइसोक्रेटिक एचपीएलसी जब आप यूज कर रहे हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं जानते होंगे आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट इल्यूशन क्या होता है। आइसोक्रेटिक इल्यूशन वो होता है जब आप किसी भी कंपोजिशन को सेम रखते हैं थ्रू आउट द एनालिसिस। मतलब आप मेथनॉल वाटर 1090 चला रहे हैं, तो थ्रू आउट द सेम है, दैट इज आइसोक्रेटिक इल्यूशन। अगर आप कंपोजिशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कभी 10 कर रहे हैं, कभी 20 कर रहे हैं, दैट इज द ग्रेडियंट इल्यूशन। ठीक है, ग्रेडियंट नेचुरल प्रोडक्ट में ग्रेडियंट इल्यूशन जो है हर्बल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल में क्या होता है कि वहाँ पर एनालाइट आपके लिमिटेड हैं। ठीक है, आपको मैंने पैरासिटामोल की एनालिसिस करनी है, ठीक है, एनालाइट लिमिटेड है, आपको पता भी है क्या है। लेकिन प्लांट सिस्टम में आपको पता नहीं कितने एनालाइट हैं, तो वहाँ पर इफेक्टिवली ग्रेडियंट इल्यूशन काम करता है। ये कुछ पीक शेप हैं, शायद मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, कैसी कैसी पीक होनी चाहिए एचपीएलसी में, कि पीक सिमेट्री क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी फैक्टर, दो पीक के सेपरेशन के बीच क्या फैक्टर होता है, वो क्या होना चाहिए। कि सर ने आपने बताया जो इस पे टीएलसी आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि किस तरीके से हम टीएलसी द्वारा ये पता लगाते हैं, जो आपने किसी ने पूछा था कि टीएलसी से अगर कोई ड्रग हम पकड़ते हैं तो टीएलसी से इस तरीके से आप उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके पास। उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो आप कंपेरिजन करके फिर यूवी आप देखिए, यूवी इसकी मैच कर रही है। ठीक है, इस मतलब ये आपको इसमें न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट, ठीक है, इस पार्ट में मैच करता है, यूवी मैच करती है। आरएफ से आप एक आरएफ की कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, आपको यूवी भी मैच करानी पड़ेगी। ये सिनेमाफिल का है, ये आपका जैसे तो सुनिए, गीता ब्लॉग, गीता थोड़ा इनसे बात करिए, उनसे लेक्चर अगर आ रहे हैं तो देखते हैं। इंजीनियर है कोई, अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि सोर्सिया चिरायता और चिरायता में बड़ा वो रहता है कन्फ्यूजन, एंट्रोकाफिस पेनिकुलेटा और ये सोर्सिया चिरायता। ठीक है, ये चिरायता, उसका भी नाम चिरायता है, चिरायता के नाम से सेल भी होता है, यूनानी में चिरायता कहते हैं उसको। ठीक है, बड़े कन्फ्यूजन रहता है, और सोर्सिया चिरायता का नाम सोर्सिया चिरायता है। ठीक है, एंड्रोकाफिस चिरायता के नाम से बहुत जगह बिकता है। ठीक है, लेकिन आपको उसके फाइटोकेमिकल प्रोफाइलिंग है डिस्टिंक्ट है। ठीक है, इसमें डाइटरपेनॉइड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उसमें आपके शायद हाँ, इरिडोइड ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं सोचे चराइता में। तो आप एक हमारे पास सिंपल ऐसे आए थे,
तो क्या होता है कि बहुत जगह ये तो बड़ा मुश्किल से मिलता है, सुनते रहता है हाई एल्टीट्यूड प्लांट। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट है, लेकिन आपको एंड्रोकार्पिक पैनिकुलेटा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी है उसमें। लेकिन लेकिन आप फाइटोकेमिकल प्रोफाइलिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोगों का सैंपल आया था, मैंने टेस्ट किया था हम लोगों ने, तो हमारे पास मार्कर थे, आप लोगों ने चेक कर लिया था कि ये इसमें क्या पड़ा हुआ है। ये उसकी प्रोफाइल है, ये इसका मार्कर है, ये एंड्रोकार्पिक पैनिकुलेटा का। अभी एक और सैंपल आया था, बहुत सारी डिबेट चलती है कि सिंथेटिक और नेचुरल में, बहुत सारी डिबेट चलती है। अभी हमारे पास एक सैंपल आया था कैम्फर का। ठीक है, तो कैम्फर एक्चुअली प्लांट इज वेरी स्पेसिफिक, प्लांट सिस्टम बहुत स्पेसिफिक होता है, उतना हम लोग स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, प्लांट जो कैम्फर बनाता है वो जो प्लस होता है, यस, रोटेटरी होता है। ठीक है, उसकी जो कैसे पहचानेंगे आपको सिंथेटिक कैम्फर या कि ये आपका नेचुरल कैम्फर है। ठीक है, बहुत ही रेयर में आपको जो है इसमें माइनस कैम्फर मिलता है, सॉरी यल जो कहते हैं, सॉरी हाँ, और वरना यस मिलता है आपको जो आइसोमर होता है। ठीक है, ये जो CH3 यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है एक्चुअली ये हिस्टिडो सेंटर है। ठीक है, हिस्टिडो सेंटर है, तो नेचर जो बनाता है यस बनाता है, स्पेसिफिक बनाता है। सिंथेटिक में मिक्सचर होता है, सिंथेटिक जो होता है, तो आप बड़ा सिंपल देखते हैं, इसका ऑप्टिकल रोटेशन लेंगे अगर। ठीक है, इसकी जो सिंथेटिक नेचुरल कैम्फर है, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन आएगी 41 या 43 के आसपास। ठीक है, लेकिन जो और अगर सिंथेटिक है तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन 0 आएगी या 1 2 आएगी। क्यों ऐसा होता है? वो रेसमिक मिक्सचर होता है। ठीक है, उसमें डी और एल दोनों आइसोमर प्रेजेंट रहते हैं कैम्फर में। ठीक है, वो एक दूसरे के रोटेशन कैंसिल कर देते हैं, इसको उसकी ऑप्टिकल रोटेशन 0 आती है या फिर 1 2 आएगी, कम आएगी। ठीक है, लेकिन नेचर नेचर जो बनाता है, जो कैम्फोरा से निकलता है, वो यस होता है, होता है, वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है इसमें नेचुरल और सिंथेटिक कैम्फर को पहचानने में, ऑप्टिकल रोटेशन से आप पहचान सकते हैं उसको। कुछ स्टेरॉइड भी होते हैं, एडल्ट्रेशन होते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन, अभी हमारी जो फार्माकोपी मेथड है, विजुअल मेथड है एफ्लाटॉक्सिन का। ये 4 एफ्लाटॉक्सिन इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी जो मेथड है विजुअल मेथड है, केवल हम पीएलसी की उसकी स्क्वाट की इंटेंसिटी देखकर पता लगाते हैं। ठीक है, कि इसमें मतलब है कि नहीं है। ठीक है, अब जो मेथड है क्वांटिफाई करने का, वो यूपीएलसी एचपीएलसी है, दोनों मेथड है अवेलेबल। आप यूपीएलसी भी कर सकते हैं, एचपीएलसी। अभी हम लोग जो फार्माकोपिया में 4 की 4 एफ्लाटॉक्सिन की बात करते हैं। ठीक है, बस हम आपको नॉलेज के लिए एक और हम बता रहे हैं, M1 एक और बात होती है M1 की। अभी हम लोग कोई कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो M1 है। ये M1 क्या है? M1 कुछ नहीं है कि जो जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, अगर वो इन्फेक्टेड फूड को खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मोर चांस है कि M1 हो, M1 एफ्लाटॉक्सिन हो। है क्या ये B1 ही है? ठीक है, वहाँ पे ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये B1 से बन जाता है M1। अगर किसी कैटल ने इन्फेक्टेड फूड को खाया है, ठीक है, तो उसमें उसकी जो फूड प्रोडक्ट, सॉरी, जो मिल्क प्रोडक्ट है, उसमें मोर चांसेस M1 होगा। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेनिक B1 है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सिवियरिटी उनकी कम है, इसलिए B1 की टू रखी गई है, वहाँ की 35 रखी गई है। अभी M1 हमारे फार्माकोपिया में नहीं है, तो आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि M1 पे भी बात चल रही है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में ये बात होती है M1 की। ये इसका क्या नाम है, एफ्लाटॉक्सिन का कैसे कि देखिए, सैंपल प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। आपको बाद में सिंपल, आप एक बार सैंपल प्रिपरेशन आपने कर ली, फिर आपको इंजेक्ट ही करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बायोकेम की किट आती है, बायोकेम एक कंपनी है, बायोकेम की किट आती है, उसमें क्या होता है, कार्ट्रिज होती है। ये एक किट है। ठीक है, इसमें ये एंटीबॉडी की तरह काम करती है किट। इसमें क्या आता है कि जब हम कोई सैंपल अपना इनपुट करते हैं उसमें, इस कार्ट्रिज में डालते हैं, तो ये होल्ड करती है इसको, एफ्लाटॉक्सिन को। उसके बाद में वाटर डालते हैं उसमें, उसको इसके इम्प्यूरिटीज को वॉश आउट करते हैं। उसके बाद में हम एस्टोनाइट्राइल उसको डाल के उसको एल्यूट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट। उसके बाद में ये हम उसको इंजेक्ट करते हैं, तो ये हमें इस तरीके से प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइलिंग मिलती है B1 G1 G2 की, इस तरीके से। ये यूएसपी का मेथड नोन है। इसके लिए आपको सैंपल 25 ग्राम से स्टार्टिंग है इसकी। 25 ग्राम कम से कम सैंपल होना चाहिए इसके लिए।
आप, क्योंकि प्यूरिफिकेशन में काफ़ी काफ़ी अमाउंट लग जाता है इसमें। देखिए इसमें दो दो मेथड है। एक ही आप ये सेल देख रहे हैं, दिस इज द कोबरा सेल। ये कोबरा को सांप आप नहीं है, मतलब ये सेल है। ठीक है, ये कोबरा सेल क्या है, पोस्ट कॉलम डर्मेटाइजेशन यूनिट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्रोमिनेशन कर दिया इन्होंने यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी इंटेंसिफाई करने के लिए। ये कोबरा सेल, अगर आपके पास यूपीएलसी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अभी हमने हमारे पास वाटर्स की यूपीएलसी नहीं ले रहे, अगर आप सिंपल एचपीएलसी कर ले रहे हैं तो उसकी सेंसिटिविटी अपलोड कम रहेगी। ठीक है, इसलिए कंपनी क्या करती है, एक पोस्ट कॉलम डर्मेटाइजेशन यूनिट फिट करती है उसमें, जो कॉलम से निकलने के बाद में यहाँ पर ब्रोमिनेशन करता है इस बॉन्ड पर, इसकी इंटेंसिटी हाई करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, बिना विदाउट कोबरा सेल आपके ऊपर वाला जो है ये है, उसके बाद में ये आफ्टर डर्मेटाइजेशन आपको ये रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप यूपीएलसी ले रहे हैं इन कंपनी, जो एचपीएलसी में तो ये जरूरत है, लेकिन यूपीएलसी में नहीं है। वाटर्स की जो यूपीएलसी है उसकी जो फ्लो सेल है इस तरीके से डिजाइन कर दी गई है, 600 नैनोमीटर उसका साइज है फ्लो सेल का, तो उसमें आपको पोस्ट डर्मेटाइजेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वाटर्स की यूपीएलसी में अभी बात कर रहे हैं, जो हमने मतलब ले रखी है। इसके अलावा शायद और यूपीएलसी में होगी, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन वाटर्स में ये फैसिलिटी है कि 600 नैनोमीटर की उसकी फ्लो सेल वॉल्यूम है, जिससे आप इजीली उसको डिटेक्ट करते, कोई पोस्ट कॉलम डर्मेटाइजेशन की जरूरत नहीं है। हम्म, हम्म। हाँ, फ्लोरेसेंट फ्लोरेसेंट तो चाहिए चाहिए। फ्लोरेसेंट तो फ्लोरेसेंट तो चाहिए चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जैसे यूवी है, उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फ्लोरेसेंट भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, इमिशन भी होता है। क्या होता है, सेम वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन इमिशन दोनों हो जाते हैं कभी कभार, तो उनकी फिर क्लियरिटी सही नहीं आती, इसलिए इसलिए जो है फ्लोरेसेंट डिटेक्टर आपको इसमें चाहिए। और क्यों चाहिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। नहीं, फ्लोरेसेंट तो आपको चाहिए। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी नॉन पोलर कंपाउंड के लिए है, पेस्टिसाइड एनालिसिस के लिए है। बहुत सारे पेस्टिसाइड इसमें हो जाते हैं, कुछ जो हमारी एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो है आपके एलसी पे होते हैं पेस्टिसाइड, जिनके जो मतलब नहीं इल्यूट हो सकते हैं। और आपको मतलब कितना टाइम में बता दूंगा, अभी 20 मिनट है, अरे बहुत है। तो पानी पीने पर आप लोग पानी पी लो, कोई बात नहीं। ये लेक्चर नहीं है, तो बात की। तो गैस क्रोमेटोग्राफी सब लोग जानते हो, नॉन वोलाटाइल कंपाउंड के लिए है। जब सॉरी, वोलेटाइल कंपाउंड के लिए, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड के लिए हम लोग एचपीएलसी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एसेंशियल ऑयल की प्रोफाइलिंग करनी है, ठीक है, उसके लिए है। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि जो वोलेटाइल कंपाउंड, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, उनकी भी जीसी की जा सकती है? कोई है मेथड ऐसा? है, 300 तक जाता है इसका वैसे इनलेट टेम्परेचर है। और कोई मेथड? हाँ, ये सही को इनका आंसर। आप उसका एस्टर बना लीजिए। ठीक है, हाँ, मिथाइल एस्टर बना लीजिए। एस्टर जो होता है उनकी खुशबू आती है एस्टर में, क्यों खुशबू आती है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आप उसको सिंपल रिएक्शन है, उसका मिथाइल एस्टर बना लीजिए। उनका मिथाइल एस्टर जैसे बनाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप इजीली जीसी कर सकेंगे। शुगर मालिक्यूल तक की जीसी कर लेते हैं एस्टर बना के लोग। ठीक है, एनएसआई, नेशनल जो शुगर इंस्टीट्यूट, हाँ, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है ना, उसमें उसमें लोग करते हैं, बहुत सारे हमने देखा है। कानपुर में एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो एक्चुअली वहाँ पर हमें बहुत एक चांस मिला था इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने हमें इससे यही क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो बोले कि आप शुगर के कैसे करेंगे जीसी। ठीक है, उसमें पीएचडी चल रही थी, एक इंटरव्यू था शायद परमानेंट पोस्ट के लिए। तो क्वेश्चन पूछी, फिर मतलब जीसी तो थी मेरे पास, वहाँ पर थी, मैं पीएचडी कर रहा था उसमें। तो मैंने किया, पर फिर वाकई में ईस्टर बना, वो तो कोई लॉजिकल बात है। ईस्टर जो है उनको, तभी तो उनकी ईस्टर लाइक खुशबू होती है, उनकी स्मेल होती है, अच्छी होती है, क्योंकि वो वोलेटाइल हो जाते हैं इजीली। ईस्टर बनाने को बॉइलिंग पॉइंट लो आ जाता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो फैटी एसिड्स हैं, बहुत सारे फैटी एसिड हैं, उनको भी मिथाइल एस्टर बनाते हैं। फिक्स्ड ऑयल में बहुत सारे फैटी एसिड, पैमेटिक है, कोलिनिक है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड है। इनका भी मिथाइल एस्टर बना के आप कर सकते हैं जीसी। हाँ,
ये फिक्स्ड ऑयल में है, फिक्स्ड ऑयल में। अच्छा, आप कोई बताएगा ऑयल कितने प्रकार के होते हैं? कौन-कौन से ऑयल होते हैं? और 3 है और एक भूल गए आप, मिनरल ऑयल भी होता है। नहीं मतलब ऑयल हम मिनरल ऑयल को तो वोलेटाइल, सॉरी एसेंशियल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, ठीक है, हम भी भूल गए। मिनरल ऑयल, एक और होता है, क्या बात करते आपने बताया था वो, वोलेटाइल हो गए, एसेंशियल ऑयल हो गए, जो एसेंशियल फिक्स्ड ऑयल हो गए, ठीक है, और मिनरल ऑयल। ये जीसी प्रोफाइलिन लिनोलिक एसिड है, ओमेगा 3 ओमेगा 6, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लेवेंजर से भी कर सकते हैं आप। ये क्लेवेंजर प्रोसेस है, ठीक है। हाइड्रोडिस्टिलेशन, जैसे आपको ऑयल निकालना है, एसेंशियल ऑयल निकालना है, तो हमारे लैब में आप देख लेना, हाइड्रोडिस्टिलेशन करते हैं उसमें। तो जो एसेंस होती है वो वेपर के साथ में आ जाती है, फिर उसकी जीसी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर फिक्स्ड ऑयल की एनालिसिस करनी है तो आपको सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। फास्ट ये फ्यूचर, ये भी सिंपल सिंपल प्रिपरेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पेस्टिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें फ्यूचर किट आती है, फ्यूचर क्लीनअप किट, फ्यूचर एक्सट्रैक्शन किट, एक किट बनी बनाई आती है, उनसे ट्रीटमेंट कराते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग मेथड भी है बहुत सारे, लेकिन आपको उस मेथड करने में पूरा दिन लग जाएगा एक ही सैंपल करने में, ठीक है मेथड, ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन आप उसको फास्ट करने के लिए फ्यूचर क्या है, क्विक, इजी, चीप, इफेक्टिव, रगड एंड सेफ मेथड, ठीक है। ये कुछ पाउचेस आते हैं, इनसे आप सैंपल को क्लीन अप कर किया जाता है। उसके बाद में आपका सैंपल ऐसा हो जाता है ट्रांसपेरेंट, आप इजीली उसको इंजेक्ट करा सकते हैं। ये पूरा प्रोफाइलिंग कैसे क्लीन अप करते हैं क्योंकि पेस्टिसाइड एनालिसिस के लिए ये तरीके हमारे पेस्टिसाइड जो लिस्टेड हैं। आईसीपीओएस हमने बताया पहली बात, आईसीपीओएस आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा जो प्लाज्मा है, इस तरीके से आप जो प्लाज्मा देख रहे हैं, इसका टेम्परेचर लगभग 11,000 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर एटम जाता है, जिससे आपका सिंपल होता है, इट गेट एटमाइज, ठीक है। तो जैसे ही वो ऊपर जाता है, एक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ को, ये देखिए ये प्लाज्मा ठीक है, in the form of H and these energies characteristic to the particular element। अगर अगर ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमें किसी ने अगर मारा तो हम थोड़ी देर के लिए मतलब एकदम गुस्से में आ जाएंगे, ठीक है, दिस इज नॉट माई ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। गुस्से में थोड़ी देर शांत तो होंगे, ठीक है, शांत मतलब गुस्सा लूज करेंगे, कभी तो शांत होंगे ना थोड़ी देर में, हो सकता है थोड़ी देर के मेरी ओरिजिनल स्टेट तो है नहीं वो, तो कभी ना कभी हम शांत होंगे, 10 मिनट 15-20 मिनट बाद हम अपने स्टेज में आ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, दैट इज द माई ओरिजिनल स्टेट। तो जब हम उस स्टेज में आएंगे तो कुछ एनर्जी लूज करेंगे, मतलब कुछ गुस्सा अपना हटाएंगे, कुछ भी करेंगे, ये सब करेक्टरिस्टिक होता है कौन कितनी देर में। तो ये करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ को ही ये इसका डिटेक्टर पकड़ता है, ये बताता है कि ये क्या है, सोडियम है कि मरकरी है कि आर्सेनिक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी आई डबल एस फटनेट डबल एस की क्या क्या कब तक आपकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक वो डिटेक्ट कर पाता है। ये एक और टेक्निक एनआईआर, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने अगर सुनी होगी, सिंपल की इसमें सिंपल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो हमने पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे बताया ना, अगर फ्रिक्वेंसी हाई है, ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी कोई भी सिंपल की, ठीक है। आईआर से एनआईआर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो उसमें जैसे एक्सरे में कोई सैंपल की जरूरत थोड़ी ना है हमारी सैंपल बनाने की, हमारे एक्सरे लगाओ, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, हमारा एक्सरे आ जाता है। क्यों ज़्यादा क्यों है, उसकी रेज की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, ठीक है, तभी तो एक्सरे मिल जाता है हमें। नहीं तो जैसे आईआर में है या फिर एनएमआर में आपको सैंपल बनानी पड़ती है, आपको उसको रीइंजेक्ट करना पड़ता है। लेकिन इसमें नहीं कि इसमें पेनिट्रेशन, ऐसे एनआईआर की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, तो इसमें आपको सैंपल बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ए पुट ए ये एक एनआईआर स्पेक्ट्रोस्कोप है, जस्ट पुट ए सैंपल and put a gun on that sample, it will directly to give the, it is very good for the best to look at the best to best variation। आपको अगर इजीली आइडेंटिफाई करना, कोई सैंपल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट एक सैंपल ले आइए, गन के सामने रख दीजिए, आपको एक स्पेक्ट्रम, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये एक उसका एग्जाम्पल है, ये एनआईआर का। अब आते हैं केमिकल मार्कर क्या है। केमिकल मार्कर हमने पहले डिस्कस किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनी ड्रग। आप उसमें जैसे फाइटो फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, उसमें भी 4 मार्कर जो, लेकिन वो सीडीएसपी की तरह डील होते हैं। फाइटो फार्मास्यूटिकल कम से कम 4 मार्कर आपको चाहिए नोन, वेदर इट शुड बी बायोलॉजिकल एक्टिव और नॉट।
लगभग 4 आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तभी आपको फाइटोफार्मास्यूटिकल कहलाएगा। ठीक है, मार्कर भी बहुत 4 प्रकार के होते हैं, थेरेपेटिकली एक्टिव मार्कर, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मार्कर। थेरेपेटिकली एक्टिव मार्कर जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, जो थेरेपेटिकली नोन है, ठीक है, वो मार्कर एज ए मार्कर यूज हो रहा है, जैसे कि सिल्मेरिन है, हिपेटोप्रोटेक्टिव में यूज होता है। आपकी विनक्रिस्टिन विलास्टिन आपको पता है कितना अंदर से निकलता है, जो एंटी कैंसर नोड ड्रग है, आज भी कीमोथेरेपी में यूज हो रही है। विनक्रिस्टिन विलास्टिन केथंदर से ड्राइव होती है वो, ठीक है। टेक्सोल है आपका, ये नॉन एंटी कैंसर ड्रग है, जो आपको उससे टेक्सोल बल्जियाना से ड्राइव होती है, ठीक है। 50% मोस्ट ऑफ द 50% डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम द प्लांट जो ड्रग है, ठीक है। चाहे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्टिमिसिनिन है, आपको मलेरिया के लिए आर्टी थराटमी तरफ से ही एनालॉग है, ठीक है, वो मलेरिया ड्रग है। उसके बाद वो भी आर्टिमिसिनिन से ड्राइव होती है। इंटेस्टिन ब्रोमास्टिन का अभी कोई वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, वही यूज होता है कीमोथेरेपी में। आप कहीं भी जाएंगे, अगर कीमोथेरेपी हो रही है तो मोस्ट ऑफ द चांस कि इंटेस्टिन ब्रोमास्टिन लोग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, थेरेपेटिकली एक्टिव है, इनकी एफिकेसी नोन है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिव ऐसा है कि फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है बट थेरेपेटिकली दे आर नॉट टेस्टेड, ठीक है, वो फार्माकोलॉजिकल मार्कर कहलाते हैं। एनालिटिकल मार्कर ऐसे मार्कर जिनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, बस ऐसे ही कुछ लोगों के साथ में कुछ दोस्त होते हैं, उनका कोई यूज नहीं है, उनके साथ में रहते तो अच्छा लगता रहता है, ठीक है। तो ऐसे एनालिटिकल मार्कर होते हैं, साथ में रहते हैं। नेगेटिव मार्कर क्या होते हैं कि कुछ मार्कर होते हैं कुछ सर्टेन लिमिट, टू सर्टेन लिमिट, ठीक है, दे कहा तो सम टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो उनकी हमें टॉक्सिसिटी डिसाइड करनी पड़ती है, तो वो दैट इज कॉल्ड ए नेगेटिव मार्कर। प्रॉब्लम क्या है, तो हमने पहले डिस्कस की थी कि ये इनको मतलब एज ए मार्कर आपको बना पाना थोड़ा थोड़ा टीडियस टास्क है, ठीक है। उनको आइसोलेट करना, ठीक है, उनको करेक्टराइज करना, ठीक है। फिर इसका एक, अगर आप सीआरएम की बात कर रहे हैं तो ठीक है, आपको एनएबीएल लेना पड़ेगा। आईसो शायद का नाम भी याद नहीं, आईसो 10 2007 उसका है, जो अलग से होता है। आपको अगर आपको मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ठीक है, वो आपको लेना पड़ेगा, आपको एनएबीएल का, ठीक है। आप ऐसे मार्कर यूज कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सीआरएम कह रहे हैं, सीआरएम जिसकी मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी है, ट्रेसेबिलिटी नोन है, वो सीआरएम कहलाता है, ठीक है। सब स्टैंडर्ड वो सीआरएम नहीं होते हैं, जिनकी ट्रेसेबिलिटी नोन है वो सीआरएम कहलाता है। बिल्कुल ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा उसमें, ठीक है। तो कैसे ओवरकम किया जा सकता है, थोड़ी सी हम 4-5 आपको बताएंगे। आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं, आइसोलेशन को तो एक्सट्रैक्शन फ्रैक्चुरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई अगर प्लांट आपको निकलना है, उसमें 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, क्रूड सेपरेशन एंड फाइन सेपरेशन। क्रूड सेपरेशन कैन बी फर्दर separated by the low pressure LPLC, medium pressure liquid chromatography, centrifugal thin layer chromatography, CTLC। अब आप सोचेंगे एक पीएलसी थी, अब ये सारी बहुत सारी एलसीएलसी कहाँ से आ गई, ठीक है। वैक्यूम लिक्विड पीएलसी, सेंट्रीफ्यूगल पार्टिशन क्रोमेटोग्राफी, फाइन सेपरेशन एचपीएलसी दोनों में होती है। फाइन सेपरेशन एज वेल एज द फुल सेपरेशन। रिपीटिव एचपीएलसी का नाम सुना सब लोगों ने, रिपीटिव एचपीएलसी भी होती है एचपीएलसी के अलावा, जिसमें आपको सेपरेशन करते हैं। आपको मतलब अमाउंट अगर कोई सेपरेशन करना है, रिपीटिव एचपीएलसी यूज करते हैं। उसकी लोडिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इन सकती है टेक्निक की, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप आइसोलेशन करने जा रहे हैं कोई कंपाउंड का, एक्सट्रैक्शन फ्रैक्चुरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए होता है, कोई भी आपकी डिजायर्ड कंपाउंड है उसको इनरिच करने के लिए, ठीक है। सपोज जैसे कि हम लोग इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर सर को आइडेंटिफाई करना होगा, इतना डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। लेकिन हम अगर 5 ग्रुप में आप सबको अलग अलग तोड़ देंगे, ठीक है, 5 ग्रुप में, 5 लोगों में से 5 का ग्रुप बना देंगे हम 10-15, तो इनको पहचानना ज़्यादा ईजी है इन कंपेरिजन टू 24-50 लोगों में, ठीक है। यही वहाँ पर काम होता है कि हम लोग फ्रैक्शनेशन इसलिए करते हैं कि जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उनको हम अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकें। जैसे 100-200 मॉलिक्यूल हैं, उनको हमने अलग अलग सेक्शन बना दिए, अलग अलग तोड़ दिए उनको, ठीक है, तो ईजी हो जाता है उनको हैंडल करना। जहाँ पर आप 200 से हैंडल कर रहे हैं, आप आपने फ्रैक्शन बना दिए तो आपने 50 ही हैंडल कर रहे हैं वहाँ पर, उन्हीं पे जूझ रहे हैं, ठीक है। और मान लो हमें 200 जूझ रहा, तो ये फ्रैक्शन से वहाँ पे इन्वर्ट होता है। कैसे करते हैं इसमें, पहले सबसे पहले आप मिथनॉल से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन डिजॉल्व इन द डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर इसलिए लेते हैं कि आप फर्दर फ्रैक्शनेट कर सकें, ठीक है। नाउ यू हैव टू फ्रैक्शनेट विद द हेक्सेन। हेक्सेन जो होता है, आपको लगभग हेक्सेन से फ्रैक्शन करने के मोनो 50% देयर डेरिवेटिव वो आते हैं हेक्सेन फ्रैक्शन में। एक्वस एक्वस फ्रैक्शन है, रेस्पेक्टिव क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, उससे ये इंक्रीजिंग पोलैरिटी में है। जो क्लोरोफॉर्म में आपके स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड एंथोसायनिन प्रोपेनॉइड फ्लोराइड कार्बामेजिन डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। ब्यूटेनॉल मोस्ट पोलर सॉल्वेंट है, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड सपोनिन टेनिन आएंगे। आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक चीज़ है, जितने भी ये सॉल्वेंट हैं, ठीक है, इसमें 2 लेयर बनेंगी, कुछ कंपाउंड ऊपर चले जाएंगे, कुछ नीचे चले जाएंगे, उसी बेसिस पे आपको फ्रैक्चरेशन करते हैं।
जितने कंपाउंड हैं, आपको पता है कि इसमें मोस्ट ऑफ द जो सॉल्वेंट है सब ऊपर आते हैं वाटर के। 2 केवल 2 सॉल्वेंट हैं, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, 2 वाटर के नीचे हैं, ठीक है, ड्यू टू हेवीनेस ऑफ क्लोरीन एटम, उसकी वजह से वो सॉल्वेंट के नीचे हैं। अब अगर एल्कलाइड एल्कलाइड कर रहे हैं स्टेप, तो एल्कलाइड की अलग लगता है आपको पीएच ग्रेडियंट इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन। ये क्या करते हैं, पहले एल्कलाइड का साल्ट बनाते हैं। एल्कलाइड में बेसिक नेचर जितने एल्कलाइड होते हैं उसमें नाइट्रोजन आइटम होता है, दे मे बी पार्ट ऑफ द रिंग और मे नॉट बी पार्ट ऑफ द रिंग। तो क्या करते हैं, इनका साल्ट बनाते हैं। आपने कभी सुना है कि साल्ट आर इजीली सॉल्वेबल इन द वाटर? ठीक है, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द एलोपैथिक ड्रग में इनका हाइड्रोक्लोराइड है, क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि दे आर इजीली सॉल्वेबल इन द वाटर, ठीक है, इजीली हमारे गट में ऑब्जर्व हो जाते हैं, इसलिए वो साल्ट फॉर्म में होते हैं। तो ये अगर एल्कलाइड पे काम कर रहे हैं, आपको इस तरीके के स्ट्रिक्शन फैक्टर में आपको प्लान करना पड़ेगा। पार्टीशन हमने पहले बता चुका, पार्टीशन होता क्या है, ठीक है। इसके ऊपर जो हमने टेक्निक बताई थी वो भी डेवलप हुई है, सीसीसी काउंटर करंट क्रोमोग्राफी। इसमें दोनों फेज, जहाँ पर स्टेशनरी, उसमें एचपीएलसी में एक फेज जो होती है स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है, इसमें दोनों फेज लिक्विड होती है। ये इतना अंतर है, ठीक है। ये सीसी है, ये एक टेक्निक, उसका एक फिगर है, सीसीसी कहते हैं। ये जो रोटर है, दिस इज द कॉलम, ये कॉलम है, ठीक है। इस तरीके अगर आपने अपने सॉल्वेंट ऑप्टिमाइज कर लिया है, तो यू विल गेट द रिजल्ट इन 3 to 4 आवर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सॉल्वेंट, तो आपको मतलब अच्छे अमाउंट में आपको प्योर कंपाउंड आइसोलेट कर सकते हैं इस टेक्निक से। ये टेक्निक हमने यूज की है, ठीक है। ये शायद फर्स्ट मशीन थी वहाँ पर सीमेब में जिसको हमने यूज किया था, क्योंकि मेरे जो सर थे जो हमारे जिसके अंदर पीएचडी की थी, वो यूएस से वो टेक्निक सीख के आए थे। ये यूएस में उनकी लेबोरेटरी में थी, तो वो जब यहाँ सीमेब में आया तो उनके अंदर जब आया तो उनका मशीन थी कि वो यूज नहीं हुई थी वहाँ जब मैं गया था। जिस तरह तो मैंने इसके ऊपर काम किया, थोड़ा उसको स्टैंडर्डाइज किया, फिर हमने उसको कई सारे मॉलिक्यूल निकाले, उसको एक मेथड भी डेवलप किया, कई सारे पेपर डेवलप करके पब्लिश। क्लेबिन एल्कलाइड, ठीक, क्लेबिन क्या होता है, आइकोनिक एटम, उसमें क्लेबिन एल्कलाइड होते हैं, ठीक है। परक्यूरिया जो क्लेबिसेस परक्यूरिया निकलते हैं पहले, राई पे रिगट एल्कलाइड भी कहलाते हैं। इसमें लाइसोजॉल है, ये लाइसोजॉल, ये एक एंटी साइको एक्टिव ड्रग है लाइसोजॉल, ठीक है। लाइसोजॉल इज स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ पेपरगोलिन, जो कि एंटी पार्किंसन ड्रग में यूज होता है आजकल। ये लाइसोजॉल है, लेकिन ये बैंड प्रोडक्ट है सब। तो लाइसोजॉल भी साइको एक्टिव होता है, ठीक है। ये सीड आइपो मॉर्निंग ग्लोरी जो सीड होता है उससे निकलता है बहुत ज़्यादा, लगभग 60 से 53% लाइसोजॉल इसमें होता है। ये क्लेबिन एल्कलाइड है, ये उसकी क्रोमेटोग्राफिक कंडीशंस हैं, ठीक है। ये आपने देखोगे द lysozyme caniclomy HPLC profiling after that we have to subjected FCPC, then we got that one for the 4 gram separation, 182 gram of penoglobin and 2 to 10 ग्राम ऑफ लाइसोजॉल, ठीक है। ये ये रिजल्ट है एक दिन का। एक दिन में आप कॉलम चलाएंगे, आपको 6 मंथ लगेंगे लगभग, या 1 साल लगेंगे इसको निकालने के लिए। तो ये एक दिन का रिजल्ट है, एक दिन के रिजल्ट आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन वी गॉट 210 ग्राम ऑफ लाइसोजॉल। ये इफेक्टिव टेक्निक है। एक और बात करते हैं सेंटिफिक और एसिलेटेड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें आप अपना विजुलाइज भी कर सकते हैं। आप अगर इसको देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी वहाँ पर एक एक तो आप बैंड को कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपना solution देख सकते हैं। ये आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा प्रेस क्रोमेटोग्राफी, ये मीडियम प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसका अब एडवांस वर्जन भी आ गया है, इसमें यूवी डिटेक्टर भी अटैच हो गया है, ठीक है। ये भी हाई मतलब ज़्यादा सेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें आप इलास्टिक डिटेक्टर भी आ गया है, यूवी डिटेक्टर भी आ गया है। ये वैक्यूम, ये सिंगल ग्लास एपरेटस है, ये वैक्यूम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। अब ज़्यादा डॉक्टर ललित जी हमारे पीछे बैठे हैं, थोड़ा जल्दी अभी तो नहीं, अभी रुक जाओ 10 मिनट। ये वैक्यूम लिक्विडोग्राफी का एक लैब का एक डायग्राम है। देखिए क्रोमेटोग्राफी तो सेम है, ठीक है। आप ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, कोई प्रेशर ऊपर से दे रहे हैं तो वो आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गई, सीटीएलसी एमपीएलसी भी हो गई, एचपीएलसी भी हो गई। अगर आप नीचे से वैक्यूम दे रहे हैं, दैट्स द वैक्यूम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सब में सिलिका जले होता है, सब में आपको कॉलम यूज होगा। अब आते हैं, आपको मॉलिक्यूल तो निकाल लिया, ठीक है। एक थोड़ा सा आपको बताएंगे, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आपको आइडिया मतलब आपने मॉलिक्यूल निकाल लिया, अब आपका चैलेंजेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन वाली बात है,
आप काम करेंगे उतना और कंफ्यूज होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चैलेंज स्टार्ट हो गया कि आप उसको करेक्टराइज करना है। ठीक है, भगवान करे कि वो नोन मालिक हो, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी। अगर अब वो अननोन है तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी तबाह हो जाएगी, शादीशुदा तो और ज़्यादा तबाह हो जाएगी। ठीक है, हैं? हाँ, तब मतलब बता रहे ना, लेकिन तबाही का मतलब क्या है? चैलेंज ही तो है। ठीक है, तो आपको फिर और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, 6-6 महीने लग जाते हैं एक स्क्रिप्ट सॉल्व करने में। ठीक है, 5-5 6-6 महीने अननोन है कंपनी, ठीक है, फिर आपको लॉट ऑफ स्टडी करवानी पड़ेगी क्योंकि आपको क्लेम करना है कि ये मॉलिक्यूल जो है अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता था, जब कोई नॉन मॉलिक्यूल निकलता था, अननोन सॉरी, तो उसके नाम से, अपने नाम से उसका नाम दिया जाता था। जैसे कि अगर हमने कोई मॉलिक्यूल निकाला, हमारा नाम अनुपम है, अनुपम मौर्य है, तो अनुपम मौर्य एरिंग करके कुछ नाम दे सकते थे। ठीक है, फिर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उसको मना कर दिया, अब प्लांट के नाम से दिया जाता है। ठीक है, एजमल सीन आपने सुना होगा, एजमल जो एजमल एजमल थे, उन्होंने उस पे काम किया, तो एजमल उनको एजमल सीन नाम दे दिया। प्लेटरीन एक है, तो एक प्रोफेसर प्लेटरीन चाहिए, तो उनके अपने नाम दे दिया। अभी रिसेंटली अब ये चेंज हो गया, अब प्लांट का नाम से कोई प्लांट है, जैसे कि आपने मोरिंगा देखा, तो मोरिंगी किस तरीके से आप उसका नाम देंगे, ठीक है, अपने नाम से नहीं दे सकते। अरे लोग, ये आपके पास फैसिलिटी थी कि आप अपना नाम दे सकते थे, क्योंकि वो आपने उसको निकाला, आपने identify। इसमें बहुत ज़्यादा है, डेप्थ 45 है, उसमें क्या होता है कि डेप्थ 45 में कि CH2 ग्रुप जो होते हैं वो नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल का आपके CH2 डेप्थ क्या है, डिस्टॉर्शन इनहेंसमेंट पोलराइजेशन ट्रांसफर। ठीक है, इसकी एक फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जो CH2 केवल आपके नीचे की ओर आएंगे, सॉरी डेप्थ 135 में नीचे की ओर आते हैं, बाकी कंपाउंड ऊपर की ओर जाएंगे। ये सब चीज़ें एक जोड़ डाल के फिर 2D में क्या होता है कि हेटेरोन्यूक्लियर होता है, होमोन्यूक्लियर होता है, HSQC HMBC। ये क्या होता है, किस एटम के पास में आपका कौन सा एटम प्रेजेंट है। ठीक है, HSQC, उससे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। एक मॉलिक्यूल जो हमने निकाला था उसका स्ट्रक्चर है, ये रीजन जो एरोमेटिक रीजन है, आप इजीली पहचान सकते हैं कि यह इसमें कोई एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, ये रीजन है 110 से 140 के बीच में, तो इसमें देखिए ये एरोमेटिक रिंग लगी हुई है। ठीक है, आप इजीली पहचान सकते हैं। ये जो नीचे आए हैं CH2 एटम है, यानी ये 21 पे ये CH2, ये CH2 है, ये CH2 है। कितने CH2 हैं इसमें, 1 2 3 4 5 CH2 हैं, तो आप पहचान सकते हैं 5 CH2 हैं आपके एटम, सॉरी मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये सब चीजें कर करके एक स्पेक्ट्रा बैठाना जाता है। ये 2D का स्पेक्ट्रा है, ये HSQC है। HSQC कैसे पता लगाते हैं, ये 2D स्पेक्ट्रा क्या होता है, एक तरफ आप कार्बन, एक ये हम लोगों को पैकेट मिला था, गाइडेड एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन प्रोपर्टी और टेट्राफाइला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एंटी साइकोटिक एक्टिविटी बहुत थी, इसके प्लांट फिर हमने सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन किया, सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन किया, उसके बाद में और सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन करके हमने उसको मॉलिक्यूल निकाले हैं, ये 1 2 3 ये 5 मॉलिक्यूल निकाले, तो उसके बाद हमें उसका पैटर्न मिला था हम लोगों को। ठीक है, ये साइकोसिस बहुत साइकोसिस के लिए बहुत यूजफुल है ये प्लांट। अब आपने उसको मॉलिक्यूल निकाल लिया, आप करेंगे क्या, उसमें दो दो पार्ट हो सकते हैं। एक तो मॉडर्न की बात करते हैं, ड्रग डेवलपमेंट ऐसे, एक जो हमारे हर्बल की बात होती है, मार्कर, उसको मार्कर बनाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट मेडिकल मार्कर में कोई यूज है। ठीक है, उसको मार्कर बनाया जा सकता है, ये मार्कर निकाल लिया, वो तो अलग पार्ट हो गया आपका ड्रग डेवलपमेंट। इसमें भी हमारा काम है ड्रग डेवलपमेंट से, इसमें बहुत सारा काम मैंने कर रखा है SCR PSR से। ठीक है, मार्कर इधर आप मार्कर उसको बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं अब आ जाते मेथड वैलिडेशन में। ये मेथड वैलिडेशन के इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कैसे मेथड वैलिडेट करते हैं। प्रिसीजन, एक्यूरेसी, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, स्पेसिफिसिटी, रेंज ऑफ सिस्टम सुटेबिलिटी, ये सब मेथड वैलिडेशन पैरामीटर है जो ICS गाइडलाइन है, ये इसको गाइडलाइन जो फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रिसीजन मतलब रिपीटेबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट। ठीक है, एक्यूरेसी, हाउ यू क्लोज टू योर रिजल्ट। ठीक है, क्लोजनेस ऑफ रिजल्ट टुवर्ड द ट्रू वैल्यू, दैट इज एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये प्रिसीजन
मेथड वैलिडेशन मेथड वेरिफिकेशन में क्या अंतर है कि आप कोई न्यू मेथड बना रहे हैं, बिल्कुल न्यू है, तो मेथड वैलिडेशन का पार्ट है। आप उसी में कोई वैलिडेटेड मेथड उसको भी आप करें, उसको थोड़ा-सा आप एनालिसिस करके प्रिसिजन देकर तो वेरिफिकेशन का पार्ट है। किसी के पे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक लिनियरिटी से भी कर सकते हैं, आप ये ऐसे कंटेंट पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, एचपीएलसी एक ये जो स्टडी थी हम लोगों ने पब्लिश की थी, ये डेवलपमेंट ऑफ एचपीएलसी मेथड कॉन्ट्रिब्यूट मेथड बायोएक्टिव रिक्वायर्ड लाइसोसोम इन कंट्रोल हाइपरनियम डाटा बायोमेट्रिक ये उसके प्रमुख कंडीशन है, इसमें आपने एक रेसिपी की प्रिसिजन ये सब गाइडलाइन एक ये जिसको हमें पीडी सेट्टी अवार्ड मिला था इसके ऊपर डेवलपमेंट ऑफ एचपीएलसी मेथड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर मार्कर लिए एचपीएलसी ये कुछ जो हमारे जगन पसंद की आपने देखा होगा उसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है, सबको बड़े थैंक यू वेरी मच। नाइस था, नाइस, तो ये लोग बताएंगे हम इंस्ट्रूमेंटेशन instrument चार्ज चार्ज हैं? हाँ
नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये से बैठ के बोलेंगे, खड़ा होकर बोलो तो हैं? अच्छा। हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, हाँ, समझ गया, समझ गया। देख लिया भाई, बड़े-बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर है भाई, डर लगता है। चल तू वहाँ पे पॉइंटर अच्छा, कोई नहीं। कोई नहीं। हाँ, ये अभी चालू जब चालू करेगा पेंटर हाँ, वो नहीं, कोई बात नहीं, वो तो जगह तो मैं चला लूँ। इस पे टीवी में नहीं चलेगा।
Uh, Now we are ready for the another lecture, the post T session. With us, he is Dr. Sudipta De. He is the former drug controller India. He is also the drug inspector and licensing drug controlling authority of government of Delhi. He also worked as a technical advisor at the Indian Pharmacopoeia Commission. He is having the vast experience in the drug manufacturing, sales and distribution sector, legal affairs, with specialization knowledge at the regulatory laws and India and WHO affairs. He will deliver 2 lectures today on the overview of quality management system, and another will be the WHO GMP compliances. So I will request Dr. S.C. Verma sir to kindly felicitate our guest. I give you the floor. Thank you, sir. Now, I would request Day sir to kindly share their experiences with our participants. For giving me the opportunity to address you, all the Ayurvedic professionals. I also have some fear because you are doctors and I am nothing but a pharmacist. Here is my friend doctor Delhi. So, anyway, what I did is the manufacturing of drugs. I was a drug inspector basically, of allopathy. So I did the manufacture of drugs and inspection, sales, everything. And then went to CDSCO and went for COPP inspection, WPP across India. So, and I was also associated with the meetings with AYUSH Ministry and in different issues and all. I was deputed for that. So that's why I got some interest in the AYUSH systems now. Anyway, so, after retirement, I did some technical consulting, Indian pharmacopoeia, and I do some lectures in colleges. And what I do is presently is occasional consultancy for WHO COPP for Ayurvedic manufacturing all over India, whoever wants to. So this is my present occupation. Otherwise, I'm a retired getting paid. Not doing anything extra. Well, the topic is actually this overview of the quality management system in Ayush. Dr. Raman Singh recently went to Mumbai. There was a WHO conference on Ayurvedic medicine covering from 5 countries, from other countries like Thailand. I was there to make this type of beginning presentations of that. So that Dr. Raman Singh, whom I know very well, he's from my department also. Basically from this CDSQ and this lab, basically from Pharmacopoeia Commission. I know him long time. So he called me that you do this lecture. Okay. That's why I have. So let us start this presentation. So for every presentation, mainly in India, I start with a mantra. I don't know whether you will like it or not. This is a mantra I used to recite in my school days at Ramakrishna Mission. When I was very young, 4, 5, 6, 7, 8, that kind. So it is there. Om Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Kara Virvajayam, Kara Pavatu, Nam, Him Samastu, Om Shanti, Shanti, Shanti. Uh, English translation is that
May He with God protect us. May He nourish both of us. May we both acquire the capacity to study and understand the scripture. That was the knowledge book. May our study be brilliant. May we not argue with each other. Let peace and peace prevail. This is this was recited in the older times, in Rishi Gurukul times, when the young boys were under the Gurukul system of learning. So they used to recite this type of sutra for their learning and in the Gurukul actually. So this was very apt because my Ramakrishna mission it was also a sort of Sadhu type organization that they have very good schools. So I used to recite this every day. I remember it, but I have put up now. Now, my objective of the presentation is that I'll give you some history of GMP, quality assurance, and any other concept which came, how it is developed into the all Indian GMPs and any other country GMPs, all by WHO, how it was developed. We say many things about quality assurance, GMP, quality control, and all those things. How basically it led to the development of these concepts. What happened on that? And then the importance of the quality management system, and there are some concepts of quality, GMP, quality assurance, QC, and how they are related to each other. Their quality assurance is bigger or GMP is bigger, and how does quality control stands in between. So first we have to remove the confusion and the very clear concept of that. So this is a kind of an introductory. So I'll give you the major introduction, some major GMP application areas in a modern and biological application. I'll give you and next my lecture will be little bit inside GMP. But GMP itself, if I discuss, it will take at least 7 days, full time. So GMP, I cannot discuss it in 1 hour or half an hour like that. But still, we can try to give a glimpse of that. And I can also supply you the guidelines, link to the guidelines of where you can get those books from WHO. I am basing my presentation on WHO only, not the Schedule C or Schedule A or anything. Involvement of WHO. So the objective of WHO is the attainment of the highest possible level of health by all of the world, all people. But what is health? What is health? Health means what? I am free from disease. It is health. If I have some mental pressure, to that well-being is that the WHO has defined actually. There is a definition given in WHO, but you won't find it anywhere in Drug Act or anywhere. That this health, WHO defines as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not just the absence of any disease or any infirmity. So this is the thing. And WHO has found out that the supply of essential drugs, essential is for most people, what are drugs required. Supply of drugs of good quality is the prerequisite for delivery of universal healthcare. We diagnose, we give treatment, we have doctor, hospital, everything. But drug is the major part of that. Without drug, you cannot get treated. So, what about developed countries? Developed countries have the resources, technical competence, they have money, they can invest, and they have very good um, this medicines and pharmaceutical product system, very good hospitals, everything. But for limited resource countries and the developing countries, there we have uh, very less budget
So that budget is constraint is there, and resource constraint is there. So, and we have seen that there are some countries who spend as high as 40% on drugs only for their total healthcare expenditure. So drugs becomes a so much major issue. Now the question is, the drug should meet the quality safety. If if it is not meeting any of that, then the health, total health circle is compromised. So, and consider the cost. Government spends so much money on hospitals, dispensaries, and everything, medical fraternity, and other allied health staff and everything. And then still the medicine quality is not good. And so the people are not getting proper treatment, they are not getting cured. So expenditure goes away. And also there is a loss of productivity. And public pocket money is also lost. Their wages are lost. So many losses if the drugs are not good quality. And from international community in different parts of the world, there have been major drug related problems in many parts of the world, which actually led to the development of this GMP kind of product. Now you see this, it's a very long back. Sulfanilamide was some sort of raspberry flavored liquid syrup. Sulfanilamide was developed by most probably in Germany. And they were having this diethylene glycol, and the children died. Some deaths, some poisoning, something happened like that. Polio vaccine, inactivated polio vaccine was made, and the polio vaccine was given to the children. But what happened? That a lot of children got paralyzed by the polio vaccine itself because it was live, it was not inactivated. Some deaths even. And what was the thing that there was a heat inactivation, and in order in a hurry to put the product into the market, the manufacturer just scaled up the production, but that validation of the heat inactivation process was not properly done. Small scale it was okay, but in a large scale, factory scale, they could not validate it. Some part, some vaccine remained uh, active. So that was the problem that created this issue. Now this thalidomide. You do know about thalidomide? Huh? Can you tell me what happened to thalidomide? Nameless. Why? What was the reason? Thalidomide was approved and put into the market. So why it was and it happened? Sedative, some sedative effect is also there. Ladies used to take this medicine. Huh? It had a teratogenic toxin. They didn't name it. And what was the reason? अरे भाई ये enantiomeric forms है जानते हो ना mirror image of each other this polymorphic forms. So one enantiomer was good, another enantiomer was bad and giving the teratogenic, and the proper assay validation and segregation was not done, but it could have been done by this what is the optical rotation studies and all that. It could have been done, but it was not done. And there is a GMP deficiency in assay validation. So that is what happened. And this was the major issue. It happened in Germany in 62 and all that, and in other European countries. So that's why it was so much highlighted. And this became an issue for the development of concept of GMP as well as the concept of pharmacovigilance.
single incident actually led to the development of both the things, pharmacovigilance. So poor quality medicines can damage health, even harm, and even death. In 1996, more than 80 children died by taking a cough syrup, which could have glycerol, but the glycerol was contaminated with glycerol. You hear this type of things even today now. That Gambia, African countries, Noida. But you know, if you go, if you, my friend, if you dig deeper, you will come to know that Noida company, that manufacturer was arrested and put into jail, company was closed and all that. Nothing came out. It was a paracetamol setup. It didn't add any glycol. It was a finding by the CDMC. If you go into digger, dig more, you will find out this thing. And also for the Gambia, the causality analysis data was not shared by WHO to CDMC, although they raised a huge UN. There could be other motive for humiliating the Indian regulatory system and Indian manufacturing. Maybe just keep in mind that. And this type of things happened in Indonesia. But this DEG, and now the government of India has made a sort of guideline that if you want to export any cough syrup containing glycerol, you have to test for DEG in some approved laboratory like IP Commission or any other few laboratories. And then you can export it. And some products failed. They could not export. I know. So this was the thing there. Now I tell you, it was 2012. Another enantiomeric forms disaster. I think you have not come across this thing. It was happened in Pakistan. More than 36 deaths. And actually, I know that it is around 50 deaths of adult people. And dextromethorphan syrup is an antitussive syrup. But the people in our India, people used to take this codeine, Forex, and Rexcop and all that for their intoxication. And those people at Rawalpindi took this full bottle, they drank full bottle for intoxication. They didn't know that dextromethorphan was mixed with a levorotatory levomethorphan. And levomethorphan was a very potent narcotic analgesic. It is 5 times more potent than morphine. Just think of it. What can. And they took full bottle. And if you give me 2 minutes, I can explain you what happened after that. WHO came into the picture. WHO has a division called SSFFC, substandard, spurious, falsely labeled, falsified, and counterfeit. Now they have removed that counterfeit term, so SSFFC department is there. And they have, in different countries, they have one person in the regulatory authority who acts as a focal point. They can access, the focal point can access the WHO website, that site. And they raise a global alert. I was a focal point in CDSU for WHO. So when this happened, actually this was made in India, this syrup, and went to Pakistan. And the API was made in China. And WHO, what they found, they have different regional offices, American offices there. So they found that this particular one or two batches of the API, dextromethorphan, actually was exported to Paraguay, South American country. And there they inquired and found out that some syrup was made there locally, and some children were given this, and they became sick and hospitalized. Immediately, WHO intervened with some remedy or some antidote, something like that, so that they can, the children survived. So this was the case of another incident, major incident.
So there are risks in pharmaceutical products. You know, we all, those who are practicing doctors, the, all practicing people, the chemists and everybody, they believe that the medicine is okay. They are prescribing, and they cannot see whether medicine is okay or not. Matlab, by seeing the medicine, they cannot make it out. They cannot make it out. But there are damage and harm. There could be. So, and also you can see that if you get a wrongly labeled medicine, suppose you take BP medicine every day, it is labeled as BP medicine, but it is something else. So your treatment goes worse. So this can have a very severe consequence. And less than required quantity of active ingredient you have, you cannot get cured. More than quantity, you can get adverse drug reaction. So all these things are there. Even antimicrobial resistance, I think all of you know about that. So these are the major health hazards. And and as I told you, that productivity loss, income loss for the government as well as the common people. Now the way out is that the supply of good quality products is one the main prerequisite of the healthcare. And they also find out the national drug regulation and control systems, if they work fine in a satisfactory way, they can only assure the safety and quality of the medicine. Now, this national drug regulation system is that the GI office, CDSCO, or your state drug regulatory office, your AYUS office, they're all part of your allopathic office. They're all other drug regulation system. And all your laboratories, including this laboratory, is a part of the control and regulation system of what is being made. They take the samples. So in two ways they take it. So if they function satisfactorily, then we can control whatever products are in the market. WHO core strategy functions I have given. It is nothing more. They want to reduce the mortality. Part of mortality is every day, every time. Some people die, old people and all that. But there should not be excess mortality or disability or morbidity like that. And the WHO promotes healthy lifestyles and reducing risk to human health and all that. They are developing health systems. A lot of things are there. Just for information of the WHO activity. Nothing else. They ethical and evidence-based policy they want to create, and norms and standards should be properly implemented. Everything is there. And also the development of new technology they support. Now this is history, just history. They were different. It happened in 1962 that thalidomide. After that, WHO started thinking, and there are 194 members of the WHO. All countries are actually members, and they contribute to money to the WHO also. So they said you develop some guidelines, right? इसका भी guideline you make some guidelines. Not only your medical diagnosis and treatment and hospital and all these systems, all these uh, immunization programs and all that, but this is the major thing. So some guidelines are being developed that way, and they are updated time to time. So WHO revised GMP for the pharmaceutical products was made in 2003, then it is revised in 2011 and 2024. Now, concern of WHO about the quality of pharmacy. Again, the question comes: what is the quality? What is the quality of a pharmaceutical one thing, and what is the quality of anything? How you define the quality?
if I call quality management, then first of all, I have to know what is the quality. Quality of a service, quality of a product, quality of my mobile phone, and quality of the food or hotel or bus service, train, like that, everything. Because the service is also we assess as per the quality, and also the our products we also assess the quality, and it is our perception which decides the quality, not the manufacturer. So it is the features and characteristic of a product or maybe a service that actually satisfy your the stated needs, the as per specification or the implied needs. This computer has some specification. If it can satisfy, then it is quality. Or there are implied needs. I drink tea and tea need to be palatable and good. It is not written. It is just like the feeling. It is the based on the my perception as a consumer. And so it could be stated or unstated. It is subjective. There is a subjective feeling. You feel this way, I feel that way. I like a very fine writing pen. But have you seen the handwriting of Donald Trump signature? Have you seen in TV and all that? He writes very bold, some big bold pen. He, he takes this much space in writing his signature. He likes that. So after if I give him a fine writing pen, if you throw it away, he will say it is not good quality. But this actually perception change is there. That is the main thing. So, so it is the extent to which the product or the service can satisfy the purpose of the user. It is called fitness for use. So this is a particular term used in WHO, the fit for use or fitness for use. This universal concept of fitness is the quality. This bottle is fit for use as a drinking water bottle. Okay, fine. And what could be the quality of a pharmaceutical? Pharmaceutical product has got three aspects of. One is that the pharmaceutical product will satisfy or pass the test of pharmacopoeia or any other specification. It is not absolute. Your sodium chloride is laboratory reagent grade or analytical reagent grade or pharma grade, whatever you can say. But it should pass some quality, then you call it, we call it paracetamol IP. It passes IP quality standard. That's why you use paracetamol. So that way, it is complying the specification applicable and it is safe and effective. So it is a fit for intended use and they comply licensing. Suppose you are authorized to manufacture a 250 milligram ampicillin capsule. You cannot manufacture a 500 milligram unless you are permitted. So whatever licensing authority is permitted, you can manufacture that also. And it will not be risky. It will not create your manufacturing process or will not create any problem for the user. So that has to be taken care of. And the manufacturer has the responsibility of making the quality. Now I'll give you one thing that if one example of fit for use, even if it passes quality, safety, and efficacy, it may not be fit for use. How? Suppose somebody is hospitalized and undergoing some treatment, and the patient needs a, very quickly some intravenous injection of some medicine vial. Sure, happens every day, everywhere. Now this doctor comes and he finds it difficult to tear up that aluminum cap or the whole cap with rubber bung. It comes out. Then everything goes away.
he has to prick it up to 10 times. So the interest of the doctor or the health user is lost on that product, but it is safe, effective, and it is standard quality, right? So you are having some coffees, you find it very difficult to tear it up. You lose interest on that. It should protect, but at the same time, it will be easily tearable. Potato chips should be like that. Huh? So if the quality, safety, efficacy, beyond it also, it is the acceptability or fitness for you. This is another issue. Very bitter taste liquid. The children may not like. So that comes fitness for you. Quality, safety, efficacy is not the issue here. Now, how the WHO, how the GMP standards are enforced? I told you that there are two systems. One hand, there is an inspector system. Inspector goes, grants license, inspect, take samples also. So WHO GMP, national GMP guidelines, and all that. So they apply those things, and then products are manufactured, and then some sample are taken, and with the help of the NCL is the National Control Laboratories, all state drug control laboratories, central control laboratories, they are the NCL, and NMRL is National Medicinal Regulatory Authority. It's the general term used by WHO or drug control departments. So NCL does it that way. What has been made? Proof of the pudding is in its eating. How you are making it, let's see what is the sample you are making. Let's test it and see from the market that what you are making actually. So that way the things are simple. Now I'm coming to the main topic of pharmaceutical quality policy. This is actually an act of overseeing all the activities which are needed to maintain a excellent quality level in a manufacturing environment. And its basically objective of this quality management system is to implement the quality policy. Every manufacturer has a quality policy which is written in their boardroom or somewhere and all that, and this lab has some vision, mission, and those type of documents. These are all quality policy documents. And this is about what is their approach to that. Suppose somebody written that I want to make very quality, high quality drugs, safe, effective, uh, and standard quality drugs for use by the consumers and patients and all that. So to implement that, what to do? So you have to make a quality management system. So anything managing is that management. So this is the quality management system they make, and there are two parts of the quality management system. One is the quality system, which is basically the infrastructure. You have this laboratory, they have a quality system, they have this infrastructure, conference room, laboratories, and every setup and every utility supply and all, everything is there. Another thing is that some even personnel are there, good personnel. And another thing is that how to work, how the sample is received, how the record is kept, how it is done, whether there is any mix-up or anything. So how to control that thing and how to give a report. So there is a written system of how to do it. So those actions are quality assurance. They will ensure confidence that the report given by this lab is reliable. So pharmaceutical quality systems are actually linked with many other concepts. That symbolic I have given to you, that this quality assurance, GMP, quality control, quality risk management, and CAPA. Have you heard the term of quality risk management? Anybody? This is a new one. And CAPA? Those who are in the there, some of us are in the industry also.
They also know corrective action, preventive action. This is nothing but shortcomings removed and does not happen in future. Take care about checkpoints and all that. So QRM, quality risk management. This is a rather modern concept. Came maybe 10, 20, 25 years ago. So what these concepts is a kind of validation systems. So there is another department. They are doing the quality risk management. This is the quality assurance department they are doing. They actually take the manufacturing different stages of operation, and each operation there is some risk to the patient or not. If there could be some risk, there can be some risk. They assess that. Suppose filling of injectable in a room, sterile room. If the room is not sterile, some injectable may not be sterile. Bacterial load may be more, so that autoclaving it may not be sterile. Whether autoclaving is functioning or not. So these are risky ones, which can create a major disaster for the patient. So they assess it, they evaluate, they then communicate, they control it, reduce it, and review it time to time. So this is the total quality risk management team and what is going on. This QRF is basically risk management. Have you heard the term risk analytics? Today's management graduates and IIT, IIM graduates are very much in demand because they are very brainy people. They are very much demand in investment bank. Where do they join? They join the car manufacturer. They don't join there. They join the HSBC or any different all over the world, different finance companies are there. Na? They do the investment banking and all that. And their risk analytics is a major issue because where you invest, which stocks you invest in the market, and it could go down or go up. The company can earn or can lose. So they are very brainy people and they are actually appointed there. This risk analytics, everywhere it can be done. Consider the risk of making these machine guns and Operation Sindoor and all these things, and or airplanes and guns and all that. If anything goes wrong, the battle could be lost. So they do risk analysis of that. Any this risk analysis, any manufacturing system also, your brake of the vehicle, it is risky to the driver. Na? So how they check it? So this stages, so this assessment they do, and they do reduce the risk. That I give you an example. When I was a child, there was this ambassador car, and there was no handbrake. I don't know if you have seen this type of cars or not. There was no handbrake that time. Only Maruti came with the handbrake in the 80s. So that was the risk reduction. Then it came the driver may be still at risk. Let's have the seat belt. Let's make the seat belt for those who are sitting back also. Then still there is some risk. Then they thought of putting some balloon inside that steering so that you cannot get impact and all that. Then the balloon from all sides. These are all graduate development. Their car manufacturer is not benefited. It is actually benefit for the user. The steel frame on the vehicle when it is impacted, your that inside the car you are not impacted. Only engine is just broken or something like that. So this type of things they do. So this is a risk reduction, and in some way you can say there is a residual risk. Driving is always risky. So whatever they can possible and acceptable risk. Suppose you are taking a vaccine
you might develop some feverish condition or something like that. It is acceptable. but for the prevention of the main disease, for any dog bite cases, just consider the benefit of that anti-rabies vaccine. So these things and corrective, you know it is the kappa, all these things. And product quality review is that when the manufacturing goes on smoothly, then even after 1 year, they check all the data. Yeah, how many deviations? It is fluctuating more the data and the assay, or it should be smooth. They check it. They check any out of specification batches are coming or not. Then they check the methods could be improved or not. For gradual improvement also, they do this product quality review and suggest some changes. So this is the thing. What is quality assurance? So this is a systematic work. All the actions that will give you the confidence that the product or service will give you the quality product or service which is fit for intended use. Clear? And it covers all things. The cleaning man of your shop floor is also a quality assurance man. Everybody can assure, but it has a role to play in the quality assurance. Not only the top management or not only the manufacturing and analytical chemist. All persons working there should follow some way of working, some care. That will make the quality assurance possible. So it will have GMP, even product design, it goes even good distribution practice also comes to when it goes to the consumer, how it is stored and all that. That is all concern of quality assurance. And this is a proactive process because it helps to prevent any mishap. Am I clear? This is a proactive process. So even before problem arises, I take care that you check it, re-verify all the process. See the parameters which are going on. And let me tell you, I think many of you are drug inspectors. How many of you are drug inspectors? Drug inspectors. Okay. You are Ayurvedic doctors, Unani doctors. If I say that you are a quality assurance manager, will you agree or not? Huh? Dr. Asutosh is the quality assurance manager of Delhi. He is responsible for all the Ayurvedic medicines produced, dispensed, stored, and used in the hospital and everything, but all the medicines within the territory of Delhi. He is appointed by the government. He is a quality assurance inspector. External quality assurance from the other than the company. Company keep their own quality assurance, but this is the government appointed quality assurance person. It is his responsibility, and the, he works there and he is active. That actually gives the common people the confidence that there is a drug control department, and that gives the confidence that my product is actually whatever medicine I'm taking is actually good. If he is not there, this department is whatever you are getting, there is no control. You have no control in checking Golgappa sold on the road. Just like that. So, what the manufacturer is doing, very simply said, he takes some raw material, API, he takes some excipient, mixes it, processes it, and then puts up does some quality control test and puts up some packaging material inside the packaging material, primary, secondary kind of thing, and then make the final product. So now the quality product, these are the all interrelated things. You have personnel, qualified experience, you have procedure, how to
materials, packaging materials. Your processes are already validated, which you follow in Toto. That makes a quality product. So this is just a circle interdependent upon each other. This is the elements of a quality management. You can see that all these building blocks kind of thing. The GMP, sanitation, hygiene, recall. These are all big topics. I would request you to go through the books. You will get to know many things. And even schedule aim of our drug rules. It has those things because it is a lot of things have been taken from the WHO latest guide. It is almost same. The quality assurance systems will ensure the products are developed. Managerial responsibilities are defined who does good what. They create the SOPs. They organize the supply and use of the materials. They select the vendors who will supply the product. Then define the controls of manufacturing stages. Whatever control checkpoints have to be applied. Finished product should be correctly released, correctly checked for before release and all that. Then review. Then how to store and distribute. Then they time to time conduct self-inspection and self-audit. They become inspector within company. They become inspector and inspect of the facility and point out if there is any lacking. All big companies do some self-inspection. What is GMP? It could be costly or it could be headache, time consuming, more work, more paperwork. Someone may think that way, but this is what is the GMP is a part of quality assurance in a factory, in a company facility that will ensure that the products are made as to the standards given, as per the standards given, and as per the license given. And also, these are batch-to-batch products. These are consistent products. Consistently, this almost same kind of batches are being produced and the same kind of specific. So this consistency is the major thing in GMP. If you don't follow this GMP, you will don't have the consistent product produced back to back. So you get validated manufacturing process and the products will the required quality by GMP because it has defined and validated process. So it is a part of quality assurance and based on this WHO GMP actually this becomes a technical standard on which WHO certificate of pharmaceutical product scheme is based. I can tell you that later on because if one country exports to another country, the other country will ask for, I don't know, I don't go for inspection to your country. So please give me some certificate of that product from the licensing authority of your country that your product is okay and everything and it follows. And there is a WHO format for doing it. And vice versa, that country will give me while importing in this in my country, give this COPP certificate. It is given by a certificate, not that whole plant is GMP, that is not the GMP certificate. It is a certificate of pharmaceutical product. This product is allowed, this product is good, and they are actually manufactured, is stable, or there are some criteria. So those things are insisted by importing countries for importing, exporting countries for international commerce. Now see the relations. First of all is the quality policy I told you, a policy declared by the higher management that it is formally expected corporate policy overall. And then corporate policy to implement that you have a quality management system. And then in that you have a quality assurance system. Within the quality assurance system, you have the GMP. And within GMP, you have the quality control system, which is a part of it.
And that quality control is doing what they are doing. They are doing the testing of the materials, all the incoming, outgoing, in-process materials. They also test the environment and also the facility of the factory. They do many other things. It is another way of showing it, this quality objective and quality manual, and this, within that is a quality assurance system, within that is a GMP system, and within that is a quality control system. So this is the interrelation what I was going to tell you. Importance of GMP. Just if I can tell you that all the medicine you have, you are consuming, your parents are consuming, your children are consuming, all parents, all hospitalized patients are consuming. I make a statement now that they are not tested. Do you agree or not? They are not tested. Let me prove it. I have this Strepsils. This is the particular batch number. It has come out in the market. I brought it from the chemist. If they have tested it, they tested maybe 1 lakh, 2 lakh batch, and they took some 40 tablets and tested it. Rest they placed in the market on that belief that it is okay. Isn't it? This is the usual practice. Do they test every batch? Every batch cannot be tested. These are all destroying tests. Tablets, 40 tablets are destroyed. So in batch to batch process, manufacturing process, what happens that you make 1 lakh tablet and you test 40 tablets, and on that basis, it is okay. You pass everything, put into everything into the market without knowing anything else. That was done before GMP was introduced. Huh? It was a concept that time, but so many things happened. Why I test 1 lakh batches? It is not statistically possible to show that. And what you maximum did is that you just check some tablet instructions, there is some running and all that, or check some liquids clarity and all that, in some background. Nothing else. No test is done. Just think of the risk we are taking. Just believing that 40 tablets were tested and passed by the company, and whatever company claims, company what did they do, don't know, and they place it in the market. So this is the batch-to-batch system. This is the problem of the batch. We cannot rely solely on the quality control test at the end, isn't it? So how it is made is a major issue, because there are problems that there are risks like cross-contamination and mix-up, which the test cannot, quality control test cannot identify. I cannot say while testing a paracetamol tablet that it is some cross-contamination of ibuprofen is there on or diclofenac. Test is never done like that. When you test for presence of A, you test the presence of A only, not B, C, D, E, F, and all. So how to prevent that? So that comes the cross-contamination. You know cross-contamination? Hello, manufacturing persons, please tell me what is cross-contamination. Foreign material, what kind of foreign? Any previous batch material, anything. Yes, it is a process. It may be dust also.
half an hour, 1 hour, like that. That is only possible. That almost you cannot release it. All will be wasted. That representative sample you are doing IPQC, some physical test and all that. Sir, that's what I am talking about. If you have a GMP, then you can only assure GMP and quality. Then only you are assured of the quality of the product you are making, uniformity and consistency and all. Otherwise, you manufacture whole day 1 lakh tablet and just test it 40 tablets. You can't get anything. Mhm. Yes, 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 yes. Mhm. Yes. But you have to say that it passes some IP or API or some specification or something. But one thing I can say just for you, I have seen many laboratories. They what they do and specifically happens to the for the hospital. Hospital sample when it comes, the hospital doctors mostly handle. They send the sample for analysis. They pay the company for your analysis company for the or they make the full payment, whatever. When you sample it, test it, then I release the payment. Okay, fine. So there is a fine print. The suppose there is a pyrogen test to be done, doctor doesn't know what is pyrogen. Maybe no, but pyrogen test to be done, doctor doesn't know. So this laboratory test in some out of 8 or 9 parameters, they test some 7 parameters, and they say that the party have asked for our test on, and they do not test the what is the mandatory requirement. Nobody bothers about checking with the IP. Nobody bothers. The doctors don't know. Doctors, health workers, they don't know at all what is IP and what is how many test criteria, and they consider it as okay. I have seen plenty of those things. This type of you can say that practices done by the laboratory all over. This is only my experience of being a drug inspector. Anyway, sir. So cross contamination is the starting material or intermediate product or a finished product with another material is a cross contamination. And a mix up. Mix up is level mix up. Even material may be mixed up also. All white color powder. It may happen. And GMP is mandatory. That's the law. That's the thing, the importance of GMP. It is now a law you have to follow. And it is for COPP scheme also you need to apply the GMP as a W2. So cross contamination and mix up are the two things which can be removed by applying GMP, not by the quality control. But cross contamination removing absolutely may not is not possible. You can say you can reduce the cross. You can reduce the chance of mix. I give you an example of mix up. What I have seen as a regulator. Bangalore, some wholesaler found out that a manufacturing some diclofenac liquid oral no no liquid injection vial, a TML vial diclofenac. It contains some 24 vials. It contains some dry powder vial. And then inquiry was made to Delhi to Himachal Pradesh and all that. It was observed that it contained safety of dry powder injection labeled as diclofenac. But still the manufacturer, two lines, they mixed up. Still, see the audacity. Two powders mixing may be still possibility, but the liquid mixed it. They didn't bother about anything. They didn't bother about anything. This is the total GFP.
Okay, sir. Let me continue. Go, whatever way they mixed it, I don't know. So that was the case. And also, I don't know, I have time or not. Am I boring? मतलब bore तो नहीं कर रहा हूँ. ये now I am giving you another example. You won't find it in the Google. It so happened in India that in the 90s, some cotrimoxazole tablet was made by a multinational company, and it was given to the patients who had undergone eye cataract operation surgery in some camps in Karnataka, Bangalore, and that side. And after a few days, some people died. And that company was a multinational company, and the product actually passed the content of trimethoprim and sulfamethrin. So they put up a very high degree of alert. Newspaper advertisement in first page and all that. We made inquiry to Delhi and all other surrounding areas in Delhi, all all areas of Delhi. We distributed ourselves and checked this batch is available or not. They made this, don't use this batch and all that. Company was investigated. It was observed that these people actually died by hypoglycemic shock. So what happened? That but how it came hypoglycemic agent in replacement with trimethoprim or sulfamethoxazole, it was not the case because it passed all the case. So it came to the excipient, mixed up with the excipient. And some people say that it was a kind of sabotage and takeover kind of bit. Otherwise, it would not happen for a multinational big company. That company went out of business from India. So this type of things also happen. It happened in the 90s. If you are around that 90s, I know the company, I'm not taking the name. They are out of the business. So what is the quality control? It's I don't think I should tell. This laboratory is the main quality control laboratory, and there are very much experts there, what they do and all that, because I am not a quality control person at all. I passed MPharm and joined as a manufacturing chemist of LVPs and tablets and production planning, project commissioning, I have, I had to inspect quality control units, being a drug inspector, quality control labs and all that. But I am not expert in quality control. But still, these are things I have just put up. You can check this. Whether if you agree to that, I can go to the next slide. But one thing I can tell you that this quality control is a reactive process. I told you quality assurance is a proactive process, and it is a reactive process. Everything has been made, and then you test and raise the question why it is not passing. So there could be a problem. So this is just a reactive process. Now you have these facilities, personnel, qualified and all. Then you have sampling, you have procedures. They are making quality control people are making the STPs, environmental conditions, and all that. Labs, you have all these things are given. This is generalized representation of the lab. What they are separate. Uh, they have independent quality control heads. They have separate labs. They have HVAC systems separate. Instrument room with temperature, humidity control, and all these things. Storage of reference substances, storage of retained samples, and also uh, avoiding mix-up of the samples. Those adequate storage and everything is to be there. So functions are their sampling done by quality control, manufacturing units of raw material units and all that.
and test methods are validated. Then they review the documentation of product, all the BPR, and then they failure investigation. They investigate also the retained samples. They keep for starting retained samples should be kept for starting material as well as I have seen many manufacturers forget to keep the retained samples for the starting. They keep retained samples for the finished product. So one has to take care of that. You should ask for those drug inspectors. They should ask for what is the raw material to be sample. Intermediate, better, but raw material you need. So you know they function as they are there for quality compliance with standards and they establish the QC procedure, STPs, analytical method validation they do with quality control by the involved. Labeling proper or not, because labeling there is a law in the drug rule how to label it, proper or not. All the words that you have to check, and then you have stability testing. This, quality control people only do. They investigate complaints, then they environmental monitoring, bioburden. They do the calibration of all the instruments and apparatus. These are all functions. Now, finished product assessment is, this is the one thing is that the finished product is to be assessed with a specification, Ayurvedic or Islamic or whatever specification you have to, you have to make a report whether it complies that specification or not. But there are other factors you should check. You first check the finished fact, everything. Then what are the documents needed? Then what are the IPQC results? Then what was the condition of environment during product? That you have to check from BP. Then only the finished product can be released along with this test. And WHO guidelines on medical products, and I will say that there is a huge growth of herbal products all over the world because people are interested in and WHO is bothered about the quality. And you can see that WHO can recognize this only the finished herbal product or herbal materials or herbal products. Extract, these are all approved. But the minerals are not approved in WHO. Minerals like minerals, what is approved in Ayurvedic system or Unani system. It is not actually recognized by WHO. So if you want a WHO COPP for a mineral product, you may find it difficult because the Ayush Ministry may not agree. But still, this TRS 1010, this is WHO public document. They wrote that because different countries have some organic or inorganic material from animal source also, mineral source. You have a lot of minerals in Ayurveda. But now WHO has recognized this thing, but earlier TRS 937, it was not recognized. This factor. Now, these are some of the guidelines. The main principle of GMP of pharmaceutical products, TRS 9. TRS are the books periodically published by WHO on different subjects. This is now it is 1040, 1050 like that. So every time one number is increased, every time it is published. Technical report series. They are just periodical books. And they have some 20, 30 pages listed on different meetings and all that. WHO doesn't have many scientists.
WHO calls for scientists for all countries and convenes meeting, and then thereby they revise the guidelines, make new guidelines, drafting, redrafting, circulating, and then finally making the guidelines. So these guidelines are available. Basically, different GMP guidelines are available in the annexes of the TR. So this main principle guideline is applicable to, this is allopathic. This is applicable to all manufacturers. Plus, you have additional guidelines which is updated in TRS 101. And you have GACP guidelines. You have GHPP guidelines. I think you know it. Dr. Maiti came, no? Yesterday. No. Very learned man. And even pharmacovigilance guidelines are also available. And as far as accessing these guidelines, it is nothing but you just go to the site and download it. Simple. And there are WHO monographs for selected medicine, very big volumes of monographs, but these medicinal plants are not necessarily Ayurvedic or Indian. All countries. You can check. If you don't find a specification here, you can find there some monographs from these books also. I have downloaded it, but never dare to open it and check it. It is herbal medicines. There are just see that there are in Asia and African countries for primary healthcare. These herbal medicines are lot of, and there are traditional medicine. This regulatory authorities are there in more than 100 countries. There are research institutes in many countries. And we know artemisinin and digitally, taxans, this paclitaxel and all this, they're derived from plant sources. So, but I would like to say that the contrary to the popular belief that Ayurvedic medicine, Unani medicine, or this medicine, they can be also because they are collected. There may be some weed or something may have come to and there could be interaction, there could be plant mixing with OTC, there could be some reaction and all that. We don't know that. There could be, and sometimes the product quality is not reliable. You collect it from one source and there is some another source which has less ingredients and all that. It may happen, it happens actually. In all our edible food and masala and all that, you also get it like that. So it happens in Ayurvedic preparations also. False advertising. Nowadays, I am getting some advertisement of some because I am a diabetic. I am on insulin, so I am getting an advertisement that apart from drug, you have to take some liquid, which has some Karela, some Vijay Sar, some something like that. Then only you take it for 3 months. Then your diabetes will do. I don't know how far it is reliable or not. But what I know is that in 2010, one CSIR scientist died by taking regularly bitter gourd and bottle gourd juice. Do you know, Asutosh? Go Google. The scientist, 50 plus, and his wife both got admitted to AIMS. The husband died, and the wife was severely threatened with health issues and all that. Somehow she survived. So this bottle gourd and bitter gourd syrup created the problem. I take Karela every day, almost. We are very fond of Karela with Bengali as a subject, and we want it bitter only. At the first beginning, we have some Karela with rice. Start with bitter and end with sweet.
didn't know that, but they went on taking this despite being ill. Ah, so that, and there are other poisonous things written in the schedule one. Baba. Kada, I took Kada and by recommended by Ministry of Ayush formula and all. I got so much body heated up and all that. So I just stopped. Had to stop it. Huh. Yes, there is a pharmacovigilance system. National Institute of Ayurveda has a pharmacovigilance system. It just started actually. Now it is not that developed. I think that Dr. Raman Singh or they may be meeting, and if anybody comes from National Institute of Ayurveda at Ukla, Sarita Bihar, they can tell you what they are doing, but they are not that much spread as like in our Pharmacopoeia Commission, the Center of Pharmacovigilance. It is not much that much spread. Yes, Ayush vigilance is something has been, it has already started. Yes, and so the requirement, what is the requirement of Ayush product? If you talk it globally, about it globally, there is a different standard for different products and all that. Even in India, there are different standards, Unani standard and Ayurvedic standard, maybe the same height. So this organization, PCIMH, they are, I saw in their website that they are trying to make one herb, one standard policy. They have all those pharmacopoeias, but they are trying to make harmonize the standard. And harmonization globally, there is a problem, this lack of this information sharing, lack of safety monitoring, this pharmacovigilance, all these things are there. So we need the evidence, really scientific based evidence based research data we need for the safety and efficacy of the ice products or herbal products. Now I'm almost at the end of my presentation. I also just summing up. I will say that this manufacturing quality control and quality assurance operation is a kind of jigsaw puzzle. All things fit, then it will work fine. If one thing is missing, it may not. It is problematic. It can lead to a GMP failure. So you have to follow the authorized procedure in every detail, and there has to be meticulous documentation to trace back what happened. That is the history written in the documentation. So documentation is also very important in the system of QMS, QA. Now I'm just giving you one slide about that, the present concern of WHO on pharmaceuticals. As I told you, quality, safety, efficacy. Now WHO is concerned with two more issues, three more issues rather. Access, affordability, and accessibility. So this access. Suppose there is a drug for cancer available in USA, but not in India. Even if I spend money, I cannot access it. So this is an issue of access. And there is affordability. There is a costly medicine available for the treatment of cancer in India, costing 2 lakh, more than 2.5 lakh rupees per injection. But it is not available to a very poor person. Really, the rather well-off person cannot afford it, long-term treatment. So this is the affordability. So access and affordability, both things are actually concerned. Otherwise, you cannot reach the satisfactory level of universal health. And there is also rational use. Overdose, like I told you that Rawalpindi, overdose, low dose, how much duration you are taking, you are getting cure.
your TB symptoms are off when you take 1 month, and after that you go into work and your TB is not actually gone, so it can again relapse. So this is also an issue for WHO. Now I want you to read it, nothing else. This is just my childhood story. I give it in a pictorial form. Just you read it and follow kindly the consequence. Shall I change? Okay. It relates to kind of GMP. Thank you. I've given and this quotation, I love it. Then we quote coming together is the beginning, keeping together is the working together. Please do it. How you are seeing the 30-year span, how this part of the industry or lot of But this is a difficult question. No, I have seen the changes because earlier GAP concept was not actually understood. Now only after 2000 the people started understanding the GAP. Still there was a gap in northern India and eastern part of India. People did not understand GMP. But in the western part of India, even in smaller companies, they understood the GMP and all these things, and they invested money also. Most companies are from there, Gujarat and Maharashtra side. They understand the GMP. So overall, it will take time, and also there was a difference of uh, working standards of regulatory authorities. We in Delhi, we were selected by UPSC. Then there are other state selections. Are they of that level? Some states are very high, very good, but some states are not on that level. So they cannot implement those things. There are lacuna. There are other some extraneous things I may not tell you. So there are some people who may be interested in some other pecuniary advantage and all that. So that way, what I can say that, but still there this improvement overall in India, improvement is being done very gradual. And still what we found that companies actually, many companies go for export. And I don't have the recent export figure. Maybe the total Indian, within India, the medicine, how much value of the medicine consumed is less than the value of the medicine which are exported. It was at par a few years ago. I think it has gone. And many companies are doing the export because they are high earning. And they are making quality products, and they're at almost 40% products in volume. The Indian products are coming into the market. But you can say the USA they have it, but Japan, Indians are not. Indian companies are not allowed. Still, but but USA they allow, the HRA, European community they allow. So a lot of Indian products are exported in USA also. So they have no herbal medicines are still exported. I'm talking about the allopathic medicine. And herbal medicines are exported, but some other form, but not as Ayurvedic medicine kind of form. Huh? Huh? But if Nepal can accept it, Sri Lanka can accept it, but some other countries will not accept it, but they do it. Nepal, does Nepal have any COPP?
Huh? They are asking, I know. This was the it will be worked out. Schedule T is nothing. We needed drastic improvement on Schedule T. Schedule T is really nothing. It is not. Rather, if you can have a Schedule M, Schedule M you can have uh, in vogue in your company, then you will get WHS. Because Schedule M is almost 70 years. And there are more than 30 companies, they have got it. If you see the WHO website of WHO, you get the only companies that got it. I myself inspected some there are some other companies who got it. But even some big companies found it difficult. After some shortcomings and all that, they ultimately rectified those things. Mainly, frankly speaking, if you want to get a COPP, make a allopathic kind of setup. But the safety, efficacy, all these things are important. But, and herbal products, standardization, tasting, handling, these are most difficult things. It is very easy to handle the paracetamol or ibuprofen. But think of the product with this, it has got so many ingredients. They may be mucilaginous, they may be sticky, they may have paste infection, they may have bacterial infection, there could be mold, there could be fermentation. Who knows what will happen if you store it? But in paracetamol, nothing is going to happen. So it is most difficult. Okay. Can I have another presentation? You need a gap or I should continue? Tell me. Hmm? Continue. एक घंटा लगा ब्रेक ले लो यदि मैं कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो भाई कर लो ये एक्चुअली मैं एक चीज जानना चाहता हूँ those who are from Calcutta there is a DDPRCRI Kolkata and DSCRRI you are from Kolkata Dr. Vivasan Biswas what is that what form of that homeopathy okay 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 fine but where it is located this is the National Institute of Homeopathy that already Dakshineshwar where Alam Bazar I know I'm from the Baranagar no I stay at Delhi I'm original from Baranagar I studied at Ramakrishna Mission School Baranagar from the almost 40 years
अच्छा 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 okay. But one thing I can point it out, please be careful about it. Homeopathic are not drugs, they are medicine as per drug. You can say there is a definition of homeopathic medicine, but homeopathic drug is not the term used. Drug or drug may be a medicine, may not be a medicine. But I am telling you about the regulatory in the drug act, drug rules. You will find the definition of homeopathic medicine, not homeopathic drug. This is just a terminology they use. Just nothing else. So you are doing research. I don't know anything about homeopathy. I have only inspected some units in my time, and they were like tablet, liquid oral, and this type of idea. Uh, Rate means price. Price they decide on their costing and what can they recover from the market, what is their marketing cost and all that. This side. However, there is a so they have given, multinationals. The Jharudar has also a lot of income, but in small company they don't pay much contractual worker. That's why the big companies are getting it manufactured from some third party manufacturing kind of thing. They pay less and get the same thing. हाँ, तो आप बोलो बोलो या तो आपकी बात करो अच्छा पास में भाई ये नहीं चाहिए बोलो Can you do it at 2 o'clock? टाइम हो गया ना जल्दी जल्दी कर लेते हैं कोई नहीं वो अगर सब लोग बैठ जाए तो ठीक है क्यों जाते हैं देख लो थोड़ा कौन सा चालू करते भाई now I am continue to dig deeper into the herbal medicine gene. A little bit deeper. GMP is such a big subject, it cannot be covered in 7 days. So I can just touch. And some parts I may skip, but for the record purpose, you will get this presentation and have a clear picture of what is being done.
So there are some herbal materials handling and all that. Yes, that these laboratory people will be better to explain it, how to handle this. But what I am putting up was based on the WHO herbal guideline, which is GSS 1010. Because you may not have been exposed to that. But if you can download in your Google, what you will get it with you. It's a 20, 30 page document, but you have to read it to respect the GSS 986, which is the main. Then you will be able to follow. That is the bigger. Now you know, so these are the main documents, 986 and all that. And Indian rules, you know, there are other guidelines are similar guidelines. They are they don't have this. Other countries don't have this guidelines. Nothing here. So there are WHO guidelines in general. I'm saying you, there are guidelines, and these guidelines have we have guidelines for regulatory authorities also, and also the government laboratories. They can also go through that guideline to get, get their laboratory. They make their laboratory setup compliant to WHO. And there are some other go to the revised guidelines on any topic. I would say, don't go for old guidelines. Go for always latest guidelines. And also, you have this stability, then sampling, then these revised guidelines. You can get those things very easily. Now, GMP covers this premises, equipment, storage, material, validate processes, SOPs. I think you know it all, basically. Hygiene, sanitation, open system. Now you have for GMP, you have the process which is validated, and then you you have the proper premises and space, proper equipment, and then service, then utility supply. Then you need appropriate materials, containers, label, SOP, trained personnel, IPQC, records, any out of specification, then there should be investigation and the report, then complaint handling and reports. This is the major 10 principles of GMP that design, facility, construct the facility, and equipment, then SOP, follow the SOP, the document of work, manage work, and protect against contamination and misuse. This is the major issue of the principle of the GMP and conduct periodic audits and self-improvement. Qualification and validation. Any you have idea about qualification and validation? Is it valid? You qualify the autoclave, you uh, validate the sterilization. That's all. And is installation design qualification of an instrument, then installation qualification, then all these documents they are supplied made by the supplier company. Then they use that. Yes, and you have this operational qualification and then actual situation. Of this. So these are the validation protocol. Validation is again a massive subject. It will take few days to do. So I'm not going to just one slide I have given because TRS 9, TRS 1010 wrote something about the validation. So I've given it. And you need to have a change control system. If you change the procedure and
you half-heartedly, then it will not serve any purpose. So you have to change control. You have to take the old SOPs. You have to put a new SOP. You can make the improvement in the process also. Make the size smaller of the tablet, so that you can save some money. XCPs. You can save money on the materials. So this time the change control are done. They are reviewed actually. Now GMP aspects are lot of things are written. I cannot discuss all of it. You know this storage, handling, dispensing of materials is there. Area, environment, equipment, hygiene, personal training, then good practices in production, in processing means manufacturing, and then packaging operation. Then in quality control, then prevention of cross contamination and mix up specification. The your specification. This API is the book of specification. Then whole documentation. There are so many documents to be made. Then complaint recall system, and there are self-inspection, contract production, analysis. That one I will not discuss here. But in specification also, I'll go quickly because specification, this laboratory makes the specification of hardware code. They will be better. They can explain this. Now, herbal material. So, herbal material storage is an issue. I told you about they can have some space inspection and some contamination, some bacteria mold can develop. This makes it hazardous to handle than any allopathic item, any raw material. So there are minimum storage duration because the case attack may be there. You can store it indefinitely. And moreover, this when I use the pharmaceutical product, we get a IP grade product, right? IP grade raw material. But when we use this herbal materials, we get all sorts of collected by actually whoever is collecting it, and then whatever collection and distribution and this, you, from wholesalers you buy those materials, uh, they are not controlling really the quality of the things. So that makes it very difficult to control the quality of the herbal material you need in your. So these things are there, and very common things. What is there? Then the selection of rodenticide, insecticide, we have to carefully select. Anything remaining will cause problem of the. It may cause some discomfort to the people if any rodenticide or insecticide you are using in raw material, but in finished product it is there. So you have to check it. Whatever you use, you have to check it again because that can harm to the user. So there is a risk. Simple. This is simple actually. Nothing. Now in dispensing, you have this some experienced person dispense the material, and they have SOP. They have appropriate loading so that their body particles don't fall into the product. So that is the main objective. And accuracy of the weighing balance and all that calibration. And weighing areas with dust control, which can be achieved by reverse flow laminar. They take all the particles from there, and then uh, you can use some other materials for different. So this type of ranges are used for sampling and needless to say, clean container, air control, the area, record, everything is there. And dispense material from the raw material store is also labeled properly so that there is no services.
must be fit for the operation. And this is very important that I wanted to point out that degradation potential of the herbal raw material, waste insect, microbial contact. These are the problem areas we face from allopathic. We don't face too much this, but in Ayurvedic, so this is most important. Production areas, so of course, beauty compliant area and campaign manufacturing. You know what is campaign manufacturing? You continuously you manufacture 20 batches, 20 batches of tablet. So you don't have cross, even if there is a cross contamination, one batch to other, this is the same thing. Then you thoroughly clean it and put another batch. So you have this in the same facility, you can manufacture different batches. If you do a campaign, you have less chance of cross contamination. That's the thing. So if you strategize in that way that you make campaign manufacturing for first 15 days A and for the next 15 days B, so that will be more helpful rather than changing it. करता है, but you can manufacture, you can keep it how many time, how much time, storage time in the big good store. Lot of issues are there. AGU and all those things are there, and just dust generating nature is there for other. So that is has to be taken care of. And sometimes this dust and all these things can create allergy for the user also. And in equipment also, this dust can create the cross contamination and microbial contamination. And how to effectively clean the equipment, because some materials are sticky, I think. Sticky material cleaning, it is in tablet manufacturing in allopathy. Some people clean their tablet compression machine with brass and all that. Hmm. But here it may be difficult. It is they prefer rather vacuum cleaning or the wet cleaning because of the sticky nature of the thing. So you have to apply according to your product, apply the method. So wooden equipment was used earlier days, but it is this time. Wood actually creates particles. But still there are some orthodox products. They may require wooden equipment, but it is preferable to use the dedicated. And if they come to the contact with the chemicals, they may have some change. So it is actually discouraged. Personal best way is that you see the rule 157. You know the manufacturing personnel. I don't need to say anything about that. It is written in the dragon. And in Schedule T, you have the who will be for testing. It is written. So nothing more than that. But they are trained in pharma technology, botany, phytochemistry, whatever you are getting it. This training is also very important, regular training, because there are new techniques, new machines, new equipments, new instruments are coming. You need to be trained on that. Some development of GMP guidelines are also revised, so you need to be trained on that. And protective clothing is that there are toxic, irritant kind of products, there are allergenic products, and also from you the contamination may come. So both way it is to be protected. This are put up. Actually, the training, learning triad is that there are three ways of learning. One is the formal education, whatever degree and whatever school, college, whatever you. Then you have the working experience.
we all have working experience. Then we come for training. We gain new knowledge on the GMP, herbal products, all the training records are to be kept and all that specific training where any toxic material handling, we need specific training, how to go carefully about that, about those things, how to handle inflammable liquids. So these things are, these three are going on. After training, if some new technique has come, you come for again training. So that what we are doing is that training. It is not that we are learning and we are experienced, we have education, we have experience, but we need training throughout our working life to make the improvement in our work. Personnel, there should be airlocks with pressure differential and crossover bench. I think you have factory, if you have gone there, factory people know it. We do it like that. And hygiene, there are drug rule also says that they are free, they should be free from contagious and other diseases. And there are these sex hormones are cytotoxic, forget it. Clean habits, no smoking. Clothing is mostly the grade D and grade C areas are sufficient for Ayurvedic Ayushman. Grade B is the background area where injectables are actually filled up in LF, in which are grade A areas. So you need grade D and grade C areas. So whatever coverings and overall you have to take. I'll show this man is shown as a just he will have a crossover. He will cross from the crossover bench and go to the non-functioning area. And he has put up head cover and shoe cover or leg cover. This overall Tanzani kind of thing. And there is a particular SOP of how you put up those covers. And those are displayed actually. Now there is processing of production processing operations. Careful IPQC, avoid chance of mix-up, remove defective equipment or clean it immediately after work. Any glass and metal particle may come from your sieving, from your anything, from where anything. So you have to check it for glass or metal. It is a physical checking, but metal particles people used to check over the tablets and the mask and all that, some magnets they use. Sometimes after sieving, some metal part may come into the tablet. So that will be harmful to the user. Sanitized water piping and calibration of equipment. There could be high degree of microbial contamination of herbal material. One has to be very thorough about these things because of the nature of the material. There could be microbial contamination more load than any allopathic material. Processes of herbal materials, you know, these processes are herbal materials are either cultivated or collected from the wild. And they have their own problems. I think GACP and GHPP are actually there to help you tackle those problems. I'm not going into it. Good herbal processing practice and then herbal good herbal processing practice is the GHPP and then good agricultural and cultural practice. And then when you make further reduction or comminution, then you have GMP guidelines to be followed.
fermentation, if you make fermentation product, that will be very, you have to be careful about the introduction of the things from fermentation product to the main batch. Good practice. These are all basically GMP is basically the application of common sense, nothing else. If I can say in one word, GMP is application of common sense. If we think about the thing, then I can make it. And we don't need to read books. It is my application of common sense that I can work on the GMP. Suppose I have a cup. I have drank tea, it is lying there, it is some tea remaining there. Now it is to be cleaned. So who is cleaning, how he is cleaning, how much cleaning is to be done, how will you use some detergent or just rinse with water or hot water. So what should be optimum? And when I clean it, my objective is that I should not have in my saliva, I should not have the tea, I should not have the detergent. If I think it, then I can devise the cleaning method of this cup. Not arbitrarily of different people. Then I can make the SOP. Then it becomes a GMP followed cup. Right? The packaging and all that. These are just for information. I'm attaching this. The reconciliation of packaging material. These are very common, mostly followed things. No problem. In quality control of herbal products, you may not be able to identify single constituent all, isn't it? We identify some markers or something like that, huh? Or some properties. Okay. So sampling guides are there. Sampling. I told you about reverse flow laminar veins for sampling. Now there are four kinds of taste of herbal medicine. The active ingredients can be identified and can be quantified. B is that known therapeutic activity of the group of components. You can determine maybe the total of essential oil. Or you can determine from of the some group flavonoid. You can determine that. That's a different B. Then you cannot identify the this type of way, but you can have some marker substance which may be active, which may not be active, but due to the marker substance you can identify. And there could be others where this quantification is not feasible. You may not be able to do it. In that case, you can take a sort of characteristic chromatographic print. That's what we are doing, isn't it? So I think you can get it. You take this presentation and get it explained by them how they do it, because I have never done. Okay. So identify. Just I put this for your information from the TMS 1010. So these are physical tests, macroscopic, microscopic, the TMC, spectroscopy, chemical. But here in herbal material, you need to have a very specific test method for identifying, because there could be similar material and there could be uh, adulterant or substitutes given. I came to know that there is some cinnamon, but cinnamon is what is called is basically not the actual cinnamon. That is the cassia, some variety of that. And Sri Lanka has the actual cinnamon, and that is very costly. Huh.
I cannot distinguish a papaya seed from a black pepper. So, so there are there are very major issues, and I think it is the most difficult because I am an allopathic chemist. I don't know these things. This is the most important thing. How do you check these herbal materials adulteration and this substitute? No. So there lies there are so many things this guideline has given to go through. So now I will coming to the mix-up and cross-contamination. I told you that that transfer of the material from one material to mixing up with another material and mix up. Prevention of contamination. Now, what is contamination? Any impurity of maybe microbiological impurity or the chemical impurity. Impurity means some other thing or foreign matter. If it comes to a starting material or a intermediate product or the final product during the operation, packaging and all that, that is a contaminant. Now, when some material comes, some starting material, intermediate product and finished product, when another starting material or finished product, when it is, then it is cross contamination. General is the contaminant. It might be microbial contamination. Now see the contamination source. Human body, movement, environment, machinery, containers, fixtures, all this. How this cross contamination is? Basically four things. Improper personal hygiene. So my clothing it may come. Then airborne contaminants. Then containers and machineries are not clean. The contamination coming. And then wall, ceiling, floor, there are not smooth impervious and over. There are dust deposited. That contamination. Avoidance of cross contamination is that live vaccine forget that. So we can have that humidity, air conditioning, ventilation, and pressure differential, air extraction, air loss. How you will you recirculate the air some percentage or you take the 100% air out? Protective clothing, how you make it. Then decontamination and the cleaning, how you use the soil, jar, and sticky material. And again, the chemical residues or disinfectant or detergent, that has to be also checked that it has gone. So you can have that water analysis. So there are some factories they do some closed processing, totally closed container, and everything comes to a stainless steel piping and all. They don't open the container for cleaning after that. They do it in situ. It is called cleaning in place. They place some hot liquid or something like hot water or something like that. Inside that container itself is being cleaned from outside, not opened, totally sealed container. They clean, then thoroughly cleaning, they take wash analysis, then they check it. So this type of equipment are available actually. And whatever input they are giving, they have some filtration device, filters are put up with the piping. So sterilization in place, cleaning in place, this type of systems are increasingly used in pharmaceutical. Now dry products handling the different, liquid products handling the different. Filter bags of fluid bread dryer is another source of major contamination. I've seen fluid bread dryer, you clean it, that equipment made and all that you go for cleaning and you already clean it. But when the air is taken out, taken in, there is some
and take it and goes out also. There is some previous material goes actually gets stuck up with the filter, with the jali, with the net. That the people don't clean. It is better to use different filters for different. Then only you can reduce the. Microbiological monitoring. Do you do in your factory? Anybody? You do microbiological, all these things you do. Thank you, sir. Thank you, sir. These are the things we are changing, filtering, integrity, all these things. Major. You are handling a much more risky product than whatever I have handled making tablets. If you put me into your manufacturing area, I'll be at a loss. Yes, major thing for herbal. Now, microbial contamination source. There is nothing. It's all GMP. It's a, it's a, only you can say that GMP is the application of common sense. However, it is said that common sense is very much uncommon to common man. They don't apply. So it is just application of common sense will solve your problem. Now, what microbial contamination can you see utility, facility, improvement. I have just made a special kind of representation for that, so that we can take care of those things during cleaned equipment could be contaminated with microorganisms or food. So whether cleaning is okay or sterilization of the equipment is okay, you have to decide on that. Clean doesn't mean it is free from bacteria. It is free from particles, okay, but it is free from bacteria. Doesn't mean that. So there is will be a risk analysis in validation. So in validation, as the gentleman has said, that there is a process validation, but there is a cleaning validation. And cleaning validation for microbiological risk analysis and validation are the most important. They are unseen. Microbes are unseen. And how much time you will keep if you cover the equipment and say it after 7 days again do it or within that's where you can control it. Bioburden overall recycle sites. Deep hydrogenation of equipment could be very useful. It is thinking of but that will mix up. I told you earlier also, it will incorrect leveling, contamination, and all those things. Mostly it is improper line clearance, not non-segregated line clearance can lead to this problem. And this assembly, this line clearance system, this assembly lines, they have some movement of the plates going on like that. And sometimes, and earlier times, we used to that those cut levels were used. Those some cut levels go inside that belt and remain there. And they can again come out after some time and put into their own product. So one needs to clear. Also, some dust particles can come inside that. I've seen it. Glass bottles are filled, some necks are broken, and glass particles came within the conveyor belt that below that belt. So cleaning that below belt is a major.
that should be taken care of. Normally it was overlooked. Okay, fine. Nothing of many things. Now there are so many documents. Whatever. There are many other types of documents, but I'll discuss some principles of document. Specification, I'll go very quickly. Specifications of the herbal material for this finished product, packaging material, test procedure, all these things are there, and reference spectra and all those things. But for herbal materials, you know it already, I think. All. What are the specifications in IP? Just have a check for that, because this WHO has given this type of points that you check those things. Dried material, drying system, which part is used, what is the botanical name, what is the local name, kind of thing, what what is the activity of marker. They are limited as extract, moisture content, not on drying, any contaminants or material, aflatoxin, all these things have to be checked. Then swelling in the particle size, all these things. Documentation requirements. Why documentation is required? If I ask the question, it is the essential for specification of the all materials and methods of manufacture. We can get to documentation of this document. This book is a book of this specification. Whatever HTTP. These are the documents. We take the help of that. We say we have master formula. We take the help of that to manufacture a product. Because we come to know what to do and how to do. Only pieces of documents, but somebody told you, I will tell you this way, you tell me that way. That is not the way to actually follow the procedure. And when it is being released, the product, then with the document, manufacturing document, they can see and examine and they see what happened. Then it can help you to release it. So the importance of the document is that it is communicating. It is communicating. My test method is communicated to the analyst that you carry on this method. Is it not a communication? The document is the communication. What you did, if you write in the manufacturing record, you did this, that communicates to the releasing person that this is okay. So this is a method of communication. And cost may be slightly more. Without documentation, what will happen? There could be many fault and many out of specification products and everything. And audit. When the product is audited, you can follow it from the product in the market, you can follow it back when it was manufactured, when the raw material was purchased, and all that. All data you can get. So the characteristic, just can you tell me? I was interested to get it. This is the document, it's a 4-tier kind of document. All documents are kind of 4 level of document. Just can you tell me what is the BPR? In which level it can come? It is the top or the bottom or the middle, which one? I'm not telling you. This particular document comes to in document pyramid, in which part of the pyramid it comes? Sir, this is a record. This is record, is that quality record. This is the evidence. This comes at the bottom. This comes at the bottom. See the presentation. So
Can you say the herbarium seed? What is it? Herbarium. It's a record. Mustard formula. How to do? How to manufacture? So it is how. It is the third tab. It is the blue one. SOP. It is again what you how to do it. Validation protocol. Protocol is the who will do it, when will do it, and all that. That thing comes to the second level. Actually, if you analyze, you will find all your documents are coming to either this manual or the why, then who, what, when, where, then how to do it, and then the evidence. By Dr. Asutosh, you have a preamble in the Drug Act, an act to regulate so and so, whatever it is, the preamble. Then you have Drug and Cosmetic Act. It is very brief. What is to be done and what is not to be done. Then you have drug rule, cosmetic rule, whatever. This drug rule is the rules of procedure. How to do it, what document to be referred to, what is the forms we have to fill up, how much fee is to be paid, how a shop should be opened. All these procedures are written. These are kind of SOPs, isn't it? And when you get a license, give a license. What is in your record? Huh? This A pharmacy has got the license. That is your record. If you apply to your college, the college has some syllabus, then some work instruction, some classes, then you appear for the exam and you have the records that you have passed. So everywhere there is a document pyramid. You can place the documents in 4 ways. Not follow. Quality manual you have to follow. SOPs comes with after that. Isn't it? How to do work instruction. SOP. These are recall procedure is SOP. Logbook is a record. Going logbook. Specification is kind of SOP, you can say that you follow this specification and do it. So doing, recording it, green sheet, that becomes a record. So this is green. Is it clear? Now you have plans, photographs, albums, brochures, all are documents. Standard operating procedure is the procedure giving instructions for performing operations. It is not necessarily specific to a specific product. It is a generalized kind of procedure. How to clean the floor, how to do it. And it has got this traceability, pagination, then what are the headings are there, what to do, what not to do, and instructions in the impact. All the SOPs and all the documents have a traceability. They have a pagination, 1 of 5, 2 of 5, 3 of 5 like that. And then we have a particular document number so that we can go to the master document. We can go for that. In the logbook also we have the reference of that. So that way this standard operating procedure. So master formula is this. We follow the BPR and BMR, all these things from the master formula. This is what we documentation cycle is that right what you do and do what you write. Kind of. And if you instructor asks for it, and if you can't show that you have done it, then instructor will decide that it is not done. Simple. Complaint and recall system. There are complaint and recall systems are there. It is not available in any comprehensive guideline is not available for complaint and recall system in government.
So you have this type of SOPs and investigations and product recalls, how to do it, because companies will need a comprehensive system when they are going for when they are inviting inspectors. You say that we have no recall, no complaint, no record. That will not be approved by the regulator. You must have a system. So these are some of the difficulty defects which I do, the major, minor. These are PIC, GMP, pharmaceutical inspection convention. Europe and Australian GMP they are doing. So depending upon this recall, you could go for what type of recall, how much prompt recall you can do. Now I'm almost finished up. Just to show you some examples of these type of photographs are difficult because in manufacturing units, if I go to your manufacturing unit, you will not allow me to take photographs. Very difficult to get it, but I'm showing you. Here, this window is unclassed. This room is, not, however clean it is not fit for manufacturing. There are ledges. There are corners. There should be coving. See the warehouse. See the going balance. See the reagent bottle. See the cleanliness. Right? GMP, it is my way of putting it. It is a kind of a game. You have all these premises, validated process, equipment, and everything. You have three goals. You have to score three goals. One is the effective, say, standard product, it is safe product, and also it is fit for use. But on the other hand, you have the contamination team, which is scoring against you, trying to score. It's particulate contamination, microbial contamination, and mixed. These three are your enemies in the factory. You have to prevent them from scoring, and you have to score those things. Thank you. Quality control is a part of GMP only. You have to follow quality control. This is not a separate thing. It is GMP only. It's a major part of the GMP. So when you apply GMP, you apply quality control. Standard specifications. You have the specification. You have to set the specification on the basis of the legal pharmacopoeia there in your country, and you can prepare your own specification, studying the literature and all those things, and checking that this specification gives you the desired product quality on it. That is the main thing. So that is the GMP. So if you have incomplete specification, your product will come out incomplete with some taste, and if the sample comes to this lab and they tell it, so you have to be very careful. Anybody from Tamil Nadu? Sir, Tiruvallabur. I have a book of Tirupura. Marvelous. For everything. It is not a religious book at all. And Tiruvallabur was born from 30, 40 years before that. Such a
big philosopher. And, and some verses he has written maybe 7 words in a stanza or 3 lines or something like that. In a line. And I have the Tamil, Hindi, and English version. So it is from the education. It is totally lifestyle book. How you work on your lifestyle. So that is the book. I got it very recently. My book is there, but I got, let's see what renewal of it. This is GMP actually. This is GMP. So you agree, sir? We get many things from this Tirupati. ठीक है? Any questions? क्वेश्चन के लिए आप मुझे बाद में भी बोल सकते हो, तो बीच बीच में लिया नहीं है, थोड़ा टाइम शॉर्ट हो गया था. We have delivered two system of the Ayurveda Siddha Unani drug, and second is the WHO GMP compliances. So I would like to kindly say some words and also felicitate our experts. You know that we have listened today, Dr. Day. He's a very senior person, and he belongs to my previous colleague at CDSU when he was DDC, and I was in Indian Pharmacopoeia Commission. And you know that throughout, I think in CDSU, he is looking after these herbals at CDSU. That's why we thought that he is the right person. Just a month ago or just 2 weeks ago, we met at Mumbai, where a WHO program on GMP is going on for the WHO 0 countries, where he has given a very fruitful lecture there. So I thought that in this program also we have to invite him and can interact with you, because most of the questions related to the industries and also why the many other stakeholders regarding the regulatory point of view. So I think you enjoyed and get benefited by his lecture today. Thank you. Thank you, sir. I would request our director, sir, to kindly felicitate our guest speaker by giving him the memento of PC, IM&H. And also the certificate. Thank you, sir. Now we will proceed for the lunch. After lunch, the hands-on training will be organized at the chemistry section in pocket.